Thank you, Ra. Hopefully, so thank you everyone for joining today. So thank you everyone for joining today. I hope I'm audible and you can listen, and there is not much noise in my background. There is some though. So welcome again. We have 11, the names given to me. We have 11 candidates today, and we'll be going after in this conversation strictly in a alphabetical order, to the alphabetical order, and you can note down your candidate number in the alphabetical order. Mohsin Ali is candidate number 1. Mudassir Salim Malik is candidate number 2. On this correction, Muhammad Abdulaziz is the candidate number 1. Oh, let me restart then. Sorry. So, my apologies, ladies and gentlemen. So, you want to restart the recording? We can restart the recording. Mohsin Ali is candidate number 2. Mudassir Salim Malik, candidate number 3. Muhammad Azam Mughal, candidate number 4. Yeah. Yep, you can start that. Candidate number 5 is Muhammad Jamil Gohir. Candidate number 6 is Mujib Zahoor. Candidate number 7 is Rehan Lawala. Candidate number 8 is Shahzad Shahid. Candidate number 9 is Shamim Rajani. Candidate number 10 is Syed Ahmed. Candidate number 11 is Syed Haris Izhar. And candidate number 12 is Talha Munir Khan. So the order of today's conversation is, we'll start with 1 minute individual introduction with the area of expertise and some background. If elected, how much time are you willing to give? Any preference for your activities that you would like to spend time on? That would be item number 4. Number 5, there'll be live Q&A, 3 questions only, and that'll be 15-minute long. And then there'll be a final remarks by each of the candidate, 1 minute long. So to begin the proceedings, I'll start with candidate number 1, and please, I would not announce everybody's name. Once candidate number 1 is over, please move on to candidate number 2, 3, 4, and onwards. So we'll start with Mr. Abdulaziz, and your counter starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mr. Abdulaziz, over to you. Assalamu alaikum. My name is Abdulaziz, and I am CEO and co-founder of Humansoft Technologies. Humansoft was founded in year 2000, so we are in the industry for more than 2 decades. We are a product-focused company, and we work with retail and wholesale industry. We have over 7,000 customers. We are a domestic-focused company, so most of our customers are in Pakistan, but our export component is also steadily growing. And we try to promote Make in Pakistan. And we have also won a gold in EPICTA for our product for Pakistan. We are a small company. We are in the category of SME, 50 people company. And I believe the way to go is to increase the per employee revenue through product focus. And I would also like to mention that I have worked with Pasha in different capacities, but I will highlight that while discussing our manifesto. Over from my side. This is Mohsin Ali. I'm the CEO of Inbox Business Technologies. So it's an asset of Daud Group, who owns Anglo Chemicals, Daud Hercules, and various others. We are the second biggest conglomerate in Pakistan. Inbox founded in early 2000, and with the concept of local branded PCs. So we pivoted ourselves from a branded PCs, a something PCs, to a system integrator, towards a managed service provider. Today, we have 2,000 plus resources nationwide. We are like $30-odd million company. A major focus is domestic, along with a small portion and considerably growth area towards export oriented, towards the managed services.
What we are doing exactly, we are enabling the local setups, made with the telecom, made with the FSIs, made with the public sector. So we have executed various multi-million-dollar projects in the last 2 decades. And successful deliveries are forte. So I am the third CEO. So running this, managing this position for the last 3 years, almost 3 years now. This is the overall little bit idea about Inbox. Thank you. Assalamu alaikum ji. This is Mudassir Salim Malik. I am the CEO and founder of Apps Technologies. Along with that, I am the CTO for Ghar Tech, which is a women-led platform actually, with 500 plus technicians on board and for working on the women empowerment side. As of the Apps we work a lot on the RPA, robotic process automation. In data sciences, we work a lot on smart AI. We're working, this is from the tech part of view. Along with that, I'm working very closely with VCs in Bahrain, as of like Sandy Ventures. Locally, I am consulting most of the NICs along with the accelerators and the incubators, Inspire, be that LMKD Spark, I've been working with as well. Additionally, we've got like 250 plus employees around Pakistan, and that's all we are. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Azam Mughal, and I have over a 2-decade professional experience in the field of IT. Especially, I worked in information security, digital forensic, data centers, and governance of enterprise IT. इसके अलावा जो है वो और टुगेदर विद ज़ोएब खान, और वहाँ पे मेरे पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप 2 साल तक रही है। 2 साल में हमने यहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस वगैरह क्रिएट की है PCCI के अंदर, और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी और IT को लेके काफ़ी काम किया है। इसके अलावा जो है मैं 3 साल तक एज ए इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान ICT कंसोर्शियम को सर्व कर चुका हूँ, जो कि फॉर्म हुई थी 2010-2011 में, और उस टेन्योर फोर के अंदर जो है वो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो सबमिट कराए थे विद द हेल्प ऑफ NED यूनिवर्सिटी एंड 2 प्राइवेट कंपनीज। अनफॉर्चुनेटली जो भी बाद में हुआ उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद यूरोपीय यूनियन ऑफिस एंड कंपनीज एज वेल। इसके अलावा जो है आई हैव बीन इन टीचिंग एज वेल। NED यूनिवर्सिटी और जेबिस में जो है वो मास्टर्स की क्लासों को जो है वो क्लासेस को स्टूडेंट्स को रिसर्च एडवाइजरी जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ, और कोई तकरीबन अगर गिना जाए तो 50 प्लस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है मैंने बच्चों को काम कराया है। इसमें एक हेल्प और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पिछले 8 साल से मैं एज ए वॉलंटियर सर्व कर रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, Azam. Assalamu alaikum ji. My name is Jamil Wahir, born and raised in Lahore. Undergrad FAST, masters from LAMS, went to Cambridge for a leadership program. Started up the first formal incubated company from LAMS in 2005, where there was no concept of university incubated startups. Though I say that Abdulaziz is the first informal incubated company from LAMS, which we always hail and respect, but we were the first model that was basically constructed by LAMS to create their LAMS Center for Entrepreneurship. PSHA Award winner in 2007, PICTA Award winner in 2008, reformed the company into Qualitatum, being a independent software testing, quality assurance, and information security company, operating this for the last 14 years in 4 different geographies, including Middle East, USA, Pakistan, and Europe. Had worked with several large-scale sovereign entities, banking and financial institutions, and we have been listed twice in Gartner in their top quadrants. Last year,
Felt a need that there needs to be a design organization like IDEO that is very focused on software. Hence, we spun out a company from Qualitatum called Virtual Force, brought in another co-founder, helped him grow that company. Last 10 years, we have an institute and have been along with Virtual Force, we have a startup accelerator program where we have invested. We are the earliest investors in Oladoc, which is a healthcare company from Pakistan, Baby Planet, an e-commerce platform, Airlift, a very big name, everybody knows, ups and downs. Then a neo-banking platform from Bahrain, and a Medicheck, which is a Swedish health tech platform, which is growing fast. So based out of all these experiences, I always say that we are a proud outcome of the Pakistan IT ecosystem, and we are thankful to all the seniors who had helped us all through during this phase. As of last few years, I had been supporting the IT and technology ecosystem of Pakistan in a very different manner, but last year came on full-time as a not full-time, but came on as a contributory volunteer to the brand committee, helped brand committee think through how we could be able to take things forward. On a side, I basically had done a lot of volunteer work, helped set up a school in a very remote village in Skardu, which was developed over the last 4 years in 2 acres. And there are about 500 or 600 children now from different villages studying over there. There are a lot of other activities. Probably you guys can go over to LinkedIn. And happy to answer questions down the stream. Thank you so much, guys. Thank you, Jamil Saab and Osman. My name is Mujib Zahoji. I'm Managing Director at S&P Global. S&P Global is the third largest IT exporter from Pakistan. As per the last awards that Osman and his team, when they were at PSEB, announced back in 2020. We're looking forward to the further announcements. We have about 1,700 people in our Islamabad operation. Half of them are pure technology folks, and then the other half sort of fall into the IT-enabled service, captive office, PPO space. I also look after our operations for Philippines and Argentina. We have about 1,200 people in the Philippines and about 500 in Argentina. I've been with S&P Global for a little over 11 years now. Before this, I used to run a large BPO operation in Islamabad that I started when that operation started. And when I left it, I was the general manager there. I have been involved with Pasha before as well, and I have worked primarily in the policy area. In addition to my role at S&P Global, I'm also part of the executive committee of the US-Pakistan Women Council, which is a US State Department initiative. We have very close working relationships with the US economic section, the commercial section, and the embassy here in Islamabad. Several other initiatives as well, which we can get into later. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है। मैं आईटी की फील्ड से 1987 से मुंसलिक हूँ और पाकिस्तान में ईमेल इंट्रोड्यूस करी, फिर इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया, फिर इंटरनेट टेलीफोनी इंट्रोड्यूस करी, फिर आई इन्वेंटेड अ प्रोसेस वेयर आप जो आज कॉल सेंटर्स चलाते हैं या बाहर के नंबर पाकिस्तान में यूज़ करते हैं या कहीं भी यूज़ करते हैं, तो आई इन्वेंटेड दैट एंड उसके ऊपर मल्टीपल अवार्ड्स जीते। दिस वाज ईयर 2000। उसके बाद 2003 में पाकिस्तान में पहला इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोला, उसका लाइसेंस क्रिएट करवाया, उसके लिए थाने भी गया, उसके लिए बैंकरप्ट भी हुआ। सो अब माशाल्लाह कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है वो आगे जा रही है काफ़ी। अब तक मैं 30 किताबें आईटी के ऊपर उर्दू में लिख चुका हूँ। 12,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं इंटरनेशनल उर्दू में और इंग्लिश में सोशल मीडिया के ऊपर, और तकरीबन 14 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं रिलेटेड टू आईटी।
आगे अब मैं फुल टाइम 12 साल से फिलैंथ्रॉफी करता हूँ कि किस तरह से हमारे जो लोग हैं वो आईटी के ज़रिए अपने आप को इनेबल करके आगे निकल सकें और आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सके। शुक्रिया। शहजाद, आप नेक्स्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद शाहिद. I run a company as a group CEO of TPS Worldwide, which is a payments technology company. We have over 550 people. The company is in Pakistan and Dubai. We have customers across Europe, Middle East, Africa, and in Pakistan. Pretty much all banks that you use for your debit card and POS and ATM are practically run through our technology. UAE ka central bank ka payment gateway ho, ya African countries with the payment switches, we are running a lot of those things through our team in Pakistan. So we are a proud Pakistani company in that sense. So I've been a chairman in Pasha 3 years ago. I had been a gold winner at PICTA along with Jamil Gohir, same year. Winner at Pasha CEC Award a year ago. Becoming a chairman, I was a senior vice chairman. We had a lot of fun time with Syed and other folks at CEC back then. Also, उतनी maturity CEC में Pasha में नहीं थी जो हमें नजर आ रही है. So I've been associated with Pasha for the past at least over 10 years now in different capacities, and I've seen how a very nascent industry and association has turned into such a high profile, I would say, association. And we are seeing the growing pains as well that we observe in any such sort of growth. In terms of sort of area, other than Pasha, I am also by the vice president of Open, which is Organization of Pakistan Enterprise in North America, because मेरी ख्वाब ये है कि हम पाकिस्तान को connect कर सकें अपने global diaspora से, और Open से अच्छा network अभी मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, so मैं उसके अंदर भी काफी काम कर रहा हूँ. उसके अलावा मैं connected हूँ कुछ खास पाक कतर council से, but I think largely as a chairman, I think anybody will vouch for it that you have to work on tax matters, on policy matters, on brand guidelines, on maintaining relationship with a lot of stakeholders of the society and the members, which I try doing to whatever extent that I can. Looking forward to this election 2022, and I really hope that we emerge as a much more stronger association that we used to have seen in the past. Assalamu alaikum. Can you all hear me now? Ji. My name is Shamim Rajani, and I run a software services company by the name of Genetic Solutions. Started off this company in 2004, and now we have 3 offices in Detroit, Karachi, and Jamshoro. We have been serving customers, both MNCs and SMBs from USA, Europe, and Pakistan. Around 200 plus customers we have served in different capacities. We mostly work on open source technologies and proprietary solutions for our customers. Industries that we have been able to serve so far successfully, very successfully, I would say, is the hospitality industry, the healthcare industry, tech industry, and the logistics industry. Apart from that, we have also won the Pasha ICT Award, and we have a 38% diversity ratio in the company due to my immense interest in skill development and diversity. So that's the other organization that I run, which is a tech training incubator by the name of Consultant Corporation that I've been associated with for the last 2 decades. We've been able to train underserved youth of the community for around 9 years straight. And now we run a very successful program through that by the name of Code Girls, where we train girls in diversity, but obviously we can talk more about that later. About my immense interest in skill development and diversity training. I have been associated with Pasha for the last few years and have been chairing the skills committee for the last 2 years, still chairing the committee right now. Thank you, that's all. Ji, Assalamu alaikum. My name is Syed Ahmed. I founded DPL in 2003, or 2003 mein, so this company is working for Silicon Valley startups
we are making products as well as digital transformation consulting. We are also in IoT, specializing in areas like IoT and fintech. Pasha awards bhi jeete aur iske alawa, apart from my own company, I have been chairman of Pasha. First time I became chairman in 2015 and again in 2018. Iske alawa I'm on board of a KPIT board in PRAL and various other government areas like e-commerce, PSEB and others. आज जिस फॉर्म में आप पाशा को देख रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का फोकस देख रहे हैं, ये काम हमने 2015 से शुरू किया, पाशा को रीस्ट्रक्चर करके इस्लामाबाद में लाए, गवर्नमेंट रिलेशंस बनाई, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन आईटी एंड टेलीकॉम में आई गॉट अपॉर्चुनिटी एज एन आईटी चेयर, जिसके थ्रू हमने ये जो पाशा को स्ट्रॉन्ग किया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बरकान, शहजाद, नसीर साहब, डॉक्टर शुएब, बट अ लॉट ऑफ वेटरन्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना आप पाशा को स्ट्रॉन्ग देखते हैं और गवर्नमेंट में हमारी एक स्ट्रेंथ देखते हैं, आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स इन दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद हारिस इज़हार है और मैं को फाउंडर हूँ एप्रिकॉट स्टूडियोज़ का, विच इज़ अ कंपनी ऑफ ओजी ग्रुप। एंड मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं कराची फास्ट से पास आउट हुआ था 2010 में। ड्यूरिंग माय एजुकेशन पहली कंपनी मैंने तब स्टार्ट की थी एंड उसके बाद से जब गेमिंग में ही था, कोई 15 इयर्स से मैं तकरीबन रफली 13 इयर्स तो गेमिंग को स्टार्ट किए हुए हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 इयर्स मेरी पहली स्टार्टअप थी, वो चलाई थी। और जो लार्जेस्ट ओजी ग्रुप है तो हमारे पास कोई 10 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर द लार्जेस्ट गेम पब्लिशर्स फ्रॉम आउट ऑफ पाकिस्तान और ये हम पायनियर्स भी थे। सेकेंडली हमने फिर जोल्टा ग्रुप स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक जो पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी है और हम हर वो काम करते हैं जो पाकिस्तान में कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाए और हाई रिस्क हो लेकिन हाई रिटर्निंग। थैंक यू। So I believe we have one more candidate. Talha Munir Khan, if you're there. Talha, we can't hear you. Talha, we can't hear you yet. If you have any troubles, please, if you can message Hira on WhatsApp. If you can rejoin, there could be some conflict with other software that might be open in his computer. So voice कई दफा video और audio ना conflict कर जाती है. You have to also change your speaker. It could be that your speaker is connected to your headset or headphones. So आपके mic के साथ एक arrow का button होता है. You may want to click on that. No, we can't hear you, and we'll wait for 10 seconds. Otherwise, we'll give you the. No. We'll wait. No rush. Let's give everybody the chance. No issues with that. Take your time, Talha. I agree. So many of us tech CEOs, I'm sure we can collectively troubleshoot Talha's voice or problem. if Talha wants to open up on mobile simultaneously, that would be probably the quickest. Yeah. You may try from your mobile. अब आवाज आ रही? Oh, perfect. Yeah. Oh, yeah, Talha, finally, right? I figured it out. I think there was some application that was using the microphone. So sorry, guys, you had to wait, and I'm happy that you waited for me. So I'm Talha Munir Khan. I'm the Chief Operating Awesome. So Officer. you're on now. Hello. Yeah.
So I'm Chief Operating Officer at Citrus. Yes, you're on now. Which is a California-based company, and Chief Executive Officer of ZAC Technology Services, which is a backend office of Citrus Bits Inc. We have about 120 people in Pakistan, and many people outside Pakistan. So I have about 23 years of experience. Started my career as a web developer. Became part of a executive team of a Singapore-based company in 2007. Was part of a team that sold, did 2 exits, first in 2009 to Forrester Research. So we built an IT research business and sold it to Forrester Research. After 2 years, we built another business and sold it to Thomson Reuters, provided services to Thomson Reuters, JP Morgan, and others. For the first 13 years of my life, building international products, solutions outside Pakistan. The focus was Asia Pacific. We were not serving really in Pakistan, and then some clients from Europe and US. And then after the first 13 years of my career, I moved into kind of product development. We built a product that won a Brandon Hall Award in learning. So the first 20 years I've been really focusing on building products and services in e-learning and edtech domain. So the product that we built got a Brandon Hall Award, which is like Oscars of the e-learning in 2014. Then we took our product to China, very unique experience of taking the Pakistani technology IP built and exporting that to China. And then I built a startup, edtech, Pakistan's biggest edtech startup, a knowledge platform in Pakistan, focusing on Pakistani product, Pakistani, audience, and all of that. And I'm also founding member of Ilm Association, which is a association of 25 edtech providers in Pakistan. And now I have taken up again the challenge to scale the IT services side of a US business, and we have a very fast plan. So this is my brief introduction. Thank you. Thank you, Tarak. Thank you very much. So this concludes the first part of the exercise today. Thank you, everyone, for your contribution. We are now moving towards the second part, where I would request from candidate number 1 in alphabetical order to start with defining their manifesto, and you will be provided, each of you will be provided 2 minutes each for declaring your manifesto, and will then move on to the leg number 3 of today's exercise. So let me start with candidate number 1, Mr. Abdulaziz, please. Thank you, Osman. Overall manifesto is already shared with all the community. I will just highlight the parts of the manifesto where I can bring value. तो उसमें एक चीज जो हमारी एक्सपर्टीज है वो डोमेस्टिक बिजनेस इटसेल्फ है. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो डोमेस्टिक काम कर रही हैं, वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड वी कैन ब्रिंग their perspective, their issues to the pasha and outside pasha. We can do advocacy for them. And second aspect is the Make in Pakistan and product business. We have been in product business and promoting brand Pakistan through products and sharing our experience. मुजीब है, शहजाद शाहिद हैं जी. It's over from my side. Right, so I'll start with a phrase. As we look to the future, our industry must keep pace with the profound changes in politics, the economy, and society. We can and must
help to confront these changes. So my manifesto is based on the existing scenario, how we are dealing with the overall economy, the political turmoil, the inflation, the instability. Things are not good. But technology is one of the sector which can help the nation, right? So it's everywhere. There's a deficit of $20-30 billion, right? Out of 90, 60 something which we are making, there's a delta of 20 or 30. So by remittances and FDI, tech is one of the core focus area of government, which can help. But is it like policymakers or the government or all of these, are we aligned with them? Are we doing whatever required to bridge this gap? I doubt. So with this, I think couple of points which I highlighted my manifesto. So number one is, I think, which is hurting all of us, and where we need to work together, where we need to help with, where we need help academia and the policymaker, is closing the digital skills gap, right? So I believe we talked a lot about garbage in, garbage out. So now it's a time to highlight and enhance the skill set of the available resources. We are producing a lot of not very usable resources. We need to make them usable, and we need to sell them in a proper manner. And this is a detailed discussion where we need to introduce STEAM, where we need to introduce critical thinking, these kind of aspects in our through academy. So the first point is closing the digital skill gap. The second point, which I highlighted in the shape of redefining our strengths and priorities. So this is I'm referring to our ecosystem. So as the industry, so there are all kind of players. They are the bigger players, they are the medium-sized players, they are the smaller players, and there are very small-sized companies, startups, right? So there has to be a collaboration among all of these guys. There has to be some kind of a voice, a collective platform to address the collective problem. So there is a very thin line which we need to draw to address our common problems. And those common problems should be discussed internally among our industry members. And then we'll touch upon all of these problems with the right people, with the policy makers, right? So there are various policymakers in the country. I will discuss the second in the later part of our discussion how I can contribute to touch upon those policymakers. But I believe that thing is there, but we need to enhance our engagement with the policymakers. Third point is moving ahead with the digital century, right? So everything is depending on the digital, right? May it be the textile, may it be the fintech, may it be the telecom, or in the public sector, right? So there is a huge role of local companies. We have TPS, we have a couple of other friends who are contributing a lot to the local industries. We need to enhance and we need to add them in our ecosystem. I believe we are too much talking about exports. Export is very important, right? But we should not forget about the other parts of the system. The last 2 points. Continuation of the policies. Our friends are doing brilliant job. I think we should keep continue about the time. Yeah. So last 2 points I just highlight inclusiveness and transparency. I think we talked a lot. And a membership campaign. All members should know what kind of benefit they can get from PASHA. Right? So this is. Thank you, Nasir. We have to. Thank you. Thank you. The next candidate, please. Thank you so much. From my side, honestly, look, I am a kind of a guy who raised things from the bottom. And I believe in one thing, which is building up the right relationships, building up the right team, and then, count on it. So this is actually the part of my manifesto as well, that I'm not just targeting on one side that how to grow the SaaS business, but I also want to see like where the services business can actually add value to our community. On top of that, the gaming part, where you have a capacity of going like good $5 billion in over good 3-4 years, where we are actually spending good $325,000 per minute. So that's the part where the SaaS-based business, the services-based business, product businesses, gaming, everything comes in. So this is one thing which I really want to focus on and how to grow it. And
The element where it can grow is by collaborations, and collaborations can be a B2B collaboration. It can be merger and acquisition. This is where I really want to work on, build on the right relationships, not within the Pakistan, but on top of that, the Pakistani diaspora, how to attract them, how to build Pasha in a way that it becomes them to invest or to divert their investments to. That's one thing where I want to focus on. The other part is being part of the training programs already by Game Train or other companies. I know there is an issue of bridging the skill gap, okay, and becoming part of that one thing where teams are collaborating with the academia in the right way is the only way we can scale services, we can scale startups, we can scale businesses. That's the only thing where to move on, and this is among my top of the agendas. The third part, a nationwide drive to let people know what Pasha is, who we are, how we can help them despite in the shadows of Lahore, Karachi, Islamabad. We need to make sure that we are everywhere. People know us. Yes, Lahore, Karachi, Islamabad are the bigger ones, but at the same time, why not throughout the motorway, throughout the beyond that, Karasin, BK? That's one thing which drives me a lot. Last year, Alhamdulillah, with all the efforts, we brought in nearly like 50 members in Pasha. And this is all based on relationships. It's not based on what Pasha can do for you. Pasha can do so many things, but at the same time, you need to have one person first who can drive you. And that's how we work as a team collectively together to drive Pasha, to grow Pasha, and making sure that everyone know what we can do for them, despite of being on that hand. And next year, we are making sure we have like 200 plus on board with all of us. Thank you so much. Thank you, Mudassir. Next. Thank you, Mudassir. Before going to my manifesto, I just want to clear one point that my manifesto doesn't mean that कि जो पहले से चीज़ें चल रही हैं और जो अच्छी चीज़ें already पाशा में मौजूद हैं, which has been created or developed over the past 5 to 8 years, जो कि हमें नज़र आ रही हैं, उनको रोका जाए या उनके लिए कोई रुकावट पैदा की जाए. I just want to add few more things, which is actually the part of my manifesto. My manifesto is divided into two parts. One part is entirely related to Pasha members और revenue और businesses को लेके, जबकि second part जो है वो मेरा entirely based कर रहा है governance के ऊपर और secretariat के ऊपर. So I have chosen to throw 5 points particularly in my manifesto, in which the first point is product-based export. As far as I know from different sources, 70% of our revenue, export revenue, is based on services and outsourcing. मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए, प्रोडक्ट्स डेवलप होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर जो है वो हमारे पास एक्सपोर्ट इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होनी चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर, जो कि फ्यूचर में हमारी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है या इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं उसको एक स्टेबल पोजीशन में ला सकती है. द सेकंड वन इज के जब हम प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी की या एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू लुक इनटू के हाउ वी कैन प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स थ्रू डेलीगेट्स और सेमिनार्स और इस तरह की जो चीज़ें ऑलरेडी भाषा में चल भी रही हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी और अपनी वॉइस को जो है वो इस तरह से रेज करना होगा कि मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए. द थर्ड वन इज क्लोज रिलेशनशिप विद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द मदर ऑफ ऑल चैम्बर्स एंड लोकल ट्रेड बॉडीज़. मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और उसके आसपास जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनके साथ पाशा का एक क्लोज अलाइंस होना चाहिए. हमें उनके साथ मिलके उन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर काम करना चाहिए जिससे कलेक्टिवली सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उसके असर में आ जाती हैं किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे. माय लास्ट 2 पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन सेक्रेटेरिएट, जिसमें जो सबसे प्राइम मेरे पॉइंट या एजेंडा होगा वो ये है कि सेक्रेटेरिएट का सेल्फ रिलायंस फाइनेंशियल मॉडल.
पाशा में जो है वो रेवेन्यू के इस तरह के स्ट्रीम्स होनी चाहिए जिससे हम बआसानी अपने सेक्रेटेरिएट, जैसे कि इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट है या जो रीजनल सेक्रेटेरिएट है जिसमें कराची है, लाहौर है, उसमें अगर कोई स्टाफिंग की जाती है, कोई प्रोग्राम्स किए जाते हैं या उसमें फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वी डोंट नीड टू रेज कि हम एक फंड कॉल दें सारे मेंबर्स को और फिर लोग पैसे जमा करें, उसके बाद फिर उसे शोर मचता रहे, फिर ऑडिट के मसले हों। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक ऐसा सेल्फ रिलायंस मॉडल होना चाहिए जिसमें हमारा सेक्रेटेरिएट उसके जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो सैलरीज हैं। हाँ, वन लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी इन पाशा डिसीजंस। वो सबका पेन पॉइंट है। एक्सेस टू अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज़ अ राइट टू एक्सेस फॉर एवरी मेंबर। उसको मेंटेन करने के लिए मैं वहाँ पे कंप्लाइंस और इंटरनल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you. Next candidate, please. Ji, thank you, Azam. And thank you for the starting statement. I would like to reinforce by saying that any initiative collectively taken under Pasha, which has a positive implication and growth for the industry, should be carried on and should be supported. However, I think we are in a state of emergency. I want to highlight that because sometimes we need to reflect and say, ke, hamari positioning kya hai? And I would want to think of Pasha as an organization where we have two very core areas that we need to uplift in terms of priority and emergency. That is building sales and building delivery. When you talk about sales, I think Pakistanis had been very mediocre in terms of marketing, in terms of sales. I spent about 18 years of career while operating with an engineering mindset for 13, 14 years. For the last 5 to 6 years, I've started thinking business. And I think, like myself, there are hundreds of other entrepreneurs who were just carrying on that journey. Collectively, we have to come together. We have to build brand Pakistan in terms of building up this kind of a momentum to compete globally. अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हमारा पाए बड़ा नहीं होगा. अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे तो एक्सटर्नली हमारी ग्रोथ नहीं आएगी. देयर इज अ कॉमन मंत्रा, सेल्फ फर्स्ट बिल्ड लेटर. सारे इसको मानते हैं, लेकिन सेल्फ फर्स्ट के ऊपर फोकस रखना बड़ा जरूरी है. जो लोग समझते हैं कि शायद एक्सपोर्ट इज नॉट समथिंग that we should focus on and have a top agenda, I must say we need to reconsider all together collectively. How will I gain it or how will I contribute towards it? एक सिंपल फ्रेमवर्क है यार. हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने इनोवेटिव ऑर्गेनिक वेज इस्तेमाल करनी है. हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा TDAP, हमारा पाशा, हमारा PSEB, we all need to come together. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, and that's what, as a part of a brand committee and before brand committee, I had been contributing to by bringing all of them together to think through. Imagine 150 websites of our foreign missions talking about IT. आज एक भी website के ऊपर IT या information about Pasha exist नहीं करती, apart from a couple of them which we have been able to push. Imagine 150 foreign officers, commercial officers talking about IT and selling IT globally, जहाँ पे सारे हमारे counterparts like Indians in Bangladesh is all over. Why are we not there? We have to put our foot forward. We have to build that kind of a brand Pakistan. We have to build global consortiums. हमें अपने आप को साथ में मिलाना है, कंपनियों ने साथ में मिलना है, हमें अपने दिल बड़े करने हैं. अगर आज हम नहीं करेंगे, बड़े नहीं होंगे, हम बड़े लोगों के साथ बड़ी लीग में compete नहीं कर सकते. This is inevitable. We need to understand that. So I would want to contribute by bringing the foreign offices together, by building up the sales channel, by building up these collective collaborations and consortiums that could be able to compete globally. Point number 2, make in Pakistan. I've been part of the venture fund. I was the co-founder in New York for the last 7 years, which I exited in 2001. Invested in 40 companies, 3-time startup founder, took companies from $0 to $3 million, took 2 companies from $0 to $5 million plus dollars. The point is, we have to think the products here in Pakistan, and then we have to bring that strategy within Pasha. I would want to work with Pasha on building up a framework that can help us take forward in terms of pushing the product companies forward much and more, because they have an ability to scale 10x. Services 1x, 2x, 3x ज़्यादा नहीं जाने लगी. Product is the only opportunity which we have clearly seen in countries like Indonesia and India and other countries of the like that we are operating in. Thank you, Jamil. Thirdly, last point, the governance model is very important. Transparency builds diversity, builds transparency. Transparency builds accountability. Accountability builds progress. We have to build this governance model to build global growth as well as supply side. Thank you so much. Thank you, Jamil Saab. Thank you, Osman. So I would
as Aziz Saab said, our manifesto is shared with people. There are a couple of things that I would like to highlight that I feel add a lot of value to the overall ecosystem. My friends and colleagues spoke about selling, spoke about being product-based. I think a key enabler, as we look at countries that have been able to grow their IT exports around the world, whether it is today, whether it was 10 years ago or 15 years ago, there are certain best practices. There's a playbook out there. We don't need to reinvent the wheel. We need to localize it. However, the playbook is available to us. A central component of that playbook is having a strong policy framework. One key component of our manifesto is continuing to build strength at the policy level, creating an enabling framework where all companies, not just large enterprises or medium enterprises or small enterprises or Islamabad-based enterprises or Lahore-based enterprises or Karachi-based enterprises, the framework that will work for any and every IT and IT-enabled service company across Pakistan, whether it is product-based or service-based. Those framework ke key components kya hai? Number one, policy consistency, something that we have been fighting for the last 4 years, making sure that we can give investors and organizations policy consistency over the years. Number two, solving for infrastructure problems. And when I say infrastructure, I don't mean space only. I mean the entire ecosystem, the set of, it includes ease of doing business elements. People don't, 5 different or 15 different departments not reaching out to our companies. Yesterday, we spoke to a company that spoke about, कि जी हमारे पास social services वाले लोग आ गए, कि यार आपके पास disability का portion क्यों नहीं काम कर? Creating an ease of business, उसके बगैर आप पाकिस्तान में बड़ी companies को क्या छोटी companies को भी attract नहीं कर सकेंगे. That is what is a super critical element of creating this policy framework. Pakistan has 8 or 9 captives. That's sort of the audience, large company tech centers. Pakistan has 7 or 8 of them if we stretch the truth and stretch our imagination. India has 1,300. Poland has about 80. Egypt has now about 20 to 25. There is enough of the pie for us to have. It is absolutely critical that we compete at that level, invest in making certain that we have the collateral to go out and capture those opportunities. Investing in that area is another key component of our manifesto. My colleagues spoke about partnering with global brands where these large companies go to. Why have not been able to do that so far? There's some work being done already. I think we would want to continue focusing on that. Another key area that I feel is very, very important, and this will be my last, is making certain that we are investing in developing skills capabilities. I'll let my colleagues speak about it since we're out of time, but those would be 2 central components of my manifesto, along with my colleagues. Thank you. Shaji, next candidate, please. I think I'm next. पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे ज़बरदस्त लोग इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पाशा के अंदर इतने ज़बरदस्त लोग हैं, तो आई विश कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मोर ऑफ्टन हुआ करे ऑनलाइन. दूसरा ये कि जो मेरा मैनिफेस्टो है, मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, मैं तो रिश्ते वाली आंटी कहलाता हूँ. उस्मान इस पर्सनली आई थिंक उसकी गवाह भी देंगे कि उनका अपना बिजनेस भी जो है वो एट वन टाइम अ लॉन्ग टाइम अगो इंट्रोडक्शंस मेरा काम है जो मैं कराता हूँ. And then I go and pop in bubbles. I have to agree. क्या कह रहे हैं? You agree with the रिश्ते वाली आंटी? You have to agree. You agree with the रिश्ते वाली आंटी statement, Usman? जी. बस वो थोड़े बाल छोटे हैं, कोई मसला नहीं. But end of the day, हमारे मुल्क में 5 नए मुल्क पैदा हुए हैं लास्ट 3 साल में when it comes to technology. 20 मिलियन से हम 150 मिलियन के कंट्री बन गए हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर. तो अजीज भाई जो कह रहे हैं कि मेक इन पाकिस्तान और लोकल प्रोडक्ट्स, अभी हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बूम आना है
इन लोकल लोगों ने चलाना है। अभी तक हमारे पास कोई लोकल ऐप भी नहीं है जो कि 2-3 मिलियन से ज़्यादा लोग चलाते हों। 150 मिलियन फ़ोन होने के बावजूद हमारी अवेयरनेस का लेवल कम है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हमारे पास 1000 पाशा मेंबर हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी 50 से ज़्यादा को नहीं जानता हूँ। मेजॉरिटी को मैं मैसेज कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से, तो नाम भी नहीं बताते। पता नहीं, लगता है कि मैंने नाम पूछ लिया तो बेपर्दा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमारी जो कौम है इन जनरल, जो चैलेंज मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान में देखता हूँ, है कि हम इंट्रोवर्ट टाइप लोग हैं, हम बात करते नहीं। वैसे भी टेकीज ज़्यादा जो हैं वो कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बात नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पे पाशा के अंदर आके उनके ये जो इश्यूज़ हैं कि जी अपने आप को एक्सपोज करें, अपने आप को बताएं। जैसे आज़म जो है ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आप क्या हैं, आपका मंजन है क्या, कौन सा मंजन बेचते हैं भाई आप, व्हाट इज़ योर सर्विस यू प्रोवाइड। एंड ऑफ द डे अगर मैं आपका एम्बेसडर बन के आपकी सर्विसेज बेच सकता हूँ तो आई वुड लव टू डू दैट। अगर मुझे नहीं मालूम कि मोहसिन के जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो कहाँ से हम ले सकते हैं, किस तरह से हम सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, तो आई थिंक कि पाशा को ग्रोथ में चैलेंज आएगा। And that's where I come in. I would love to mingle more, talk more, get more people to come out. And उसके नतीजे में जो मैं भी इसी तरह का एक इंसान था आज से 20-25 साल पहले, जब मैंने आईटी का काम शुरू किया था। मैं भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट जब बाहर बेचता था, तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाई थी टेक में। तो एक जो उसके अंदर उसका गुरु था, उसने कहा पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो हम कभी भी नहीं खरीदेंगे, मेड इन पाकिस्तान तो सवाल ही पैदा ना, मैं तुम्हारे रिव्यू भी नहीं करूंगा, इट्स इम्पॉसिबल कि क्वालिटी आए। तो पिछले 20-25 साल से when I traveled the world, I was just talking about Pakistan, कि यार ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो। एंड फॉर द लास्ट 20-22 years मेरी कोशिश यही रही है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल और लोकल इकोनॉमी को ग्रो करें। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू मोर नाउ विद द पाशा मेंबर्स, जो कि 1000 कोर लोग हैं जो सुबह शाम टेक खाते हैं, टेक पीते हैं, टेक सूंघते हैं, टेक में रहते हैं। उनको अगर ग्रोथ नहीं मिलेगी तो किसको ग्रोथ मिलेगी? तो आई वांट टू ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ द माइंड्स फ्रॉम द प्लैनेट, bring it to you all, help you grow your organization, which thus in the end Pakistan grows करती है। Thank you so much. Next candidate, please. Ji, Assalamu alaikum. This is Shahzad Saeed here. My manifesto is shared by the Secretariat already on the nationwide group, but let me just quickly take you through it. So I really believe that to begin with, we have to strong within. We cannot grow the industry, we cannot grow the sector, we cannot grow the economy unless we are strong as a community ourselves. And within community, the CEC has to be very, very strong. It means that we have to be very transparent with each other. The CEC has to be empowered, held and accountable. And then as a community, we have to need very strong communication, two-way communication strategy, so that we basically become very, very strong as a community. So strong Pasha means strong IT industry. The second is about import substitution through focusing on the domestic IT. I think this is one out of fashion statement to talk about domestic IT, which is huge. If India exports $150, $150 billion, they have at least $30 to $40 billion of local IT industry. So we have to sort of open the local IT industry and the larger project within the local IT industry for the local community to take advantage of. आज के दिन जो local बड़े project होते हैं उसमें कई दफा international vendors को preference दी जाती है और local are only left with very small size projects. Somehow that sector has to be opened up through the right policy making and changes in PPRA. And this is the Make in Pakistan element of it. Third is growing the IT exports. सबसे बड़ा issue IT exports के अंदर है कि Pakistan is surrounded by all negative hopeless news about the country. सैलाब आ गया, जंग हो गई, बम फट गया. This is all what when you go outside Pakistan, तो लोग आपसे आके यही कर रहे होते हैं कि यार मुल्क में क्या, अभी मैं सऊदीया में था. Question was, yeah, we are so sorry to know about the flood and all. I really want to know about when we go outside that we are so happy about this startup becoming unicorn and this thing happening in Pakistan. So Pakistan just some sort of issue which I had fought for the past many years is about coming up with every year research journal and Pakistan references going out in all the top global journals. उसको जब तक अपनी success stories को promote नहीं करेंगे हम अपने पाकिस्तान के अंदर, ना तो FDI ला सकते हैं, ना हम एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हैं to the right potential. तो दूसरा एलिमेंट है, if you make $100 out of a service, how can we make $500 out of the same service? It has to do with the brand Pakistan. So brand Pakistan के लिए we have to work very, very hard to
create awareness, to come up with the research journal to be referred and referenced by the top speakers and all. उसके अलावा हमें जो ब्रांड पाकिस्तान के लिए जो हम लोग अपनी वेबसाइट है, पोर्टल्स हैं, जो बात अभी जमील ने भी कही, जो ट्रेड अटैचीज के थ्रू में अपने आप को प्रमोट करना है, स्किल गैप हम लोगों को कम करना है, बिकॉज वी आर IT इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ ट्रेन पीपल आउट देयर। और जो लास्ट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बात सब लोग कर रहे हैं कि अगर आपने कंपनी खोल दी पाकिस्तान में तो ऐसा ना हो कि गुनाह हो जाए। आप कहें कि बेहतर है कि मैं मुल्क से कंपनी बाहर खोलूं और मुल्क में मैं रिसोर्स हायर करूं फॉर द बैक ऑफिस। सो पाकिस्तान हैज टू बिकम अ प्रेफर्ड टेक डेस्टिनेशन वेयर वी सेट अप अ कंपनी, where we set up the engineering as well as the business side to it and then grow it. उसमें जो भी ease of business के challenges हैं, FPR, State Bank, TPRA, जो भी और elements हैं उसको हम लोग मैनेज करने की जरूरत है through the right policy interventions and fighting the case on behalf of the members. Last बात ये है जो मैं चाहूंगा जरूर बता दूं, I heavily support a very inclusive, diverse CEC and inclusive, diverse PASHA members, which means कि बहुत सारे जो सब सेक्टर्स हैं IT के अंदर, BPO है, कॉल सेंटर्स हैं, KPOs हैं, प्रोडक्ट कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट ओनली हैं, डोमेस्टिक ओनली हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, ये हमें इन सब लोगों को किसी तरीके से फ्यूजन करना है और हमें वही जो DNA है वो CEC में कैरी करना है, वही DNA हम लोगों को पाशा में कैरी करना है, ताकि हम IT सेक्टर को एज अ होलिस्टिक IT सेक्टर प्रमोट कर सकें और हर एक में हम लोग ग्रोथ ला सकें। कुछ एरियाज में ग्रोथ ज्यादा आएगी, कुछ में कम आएगी, बट वी हैव टू रियली रिप्रेजेंट द होल IT सेक्टर एज अ मदर एसोसिएशन। थैंक यू। Assalamualaikum. Thank you, Shahzad. I think some of the points that Shahzad just mentioned will overlap with some of my points. Chunki I represent the Digital Pakistan group और हमारा group का manifesto आपने देख लिया है. So different members. Sorry if I come again, Shamim, just for a second. Yeah. This is needless to say that all the amazing policies, STZ, Make in Pakistan, needless to say, we have to carry them forward. This is just I want to sort of make sure that my manifesto should not be taken in the other perspective. There are some amazing stuff going on. They have to be continued for the consistency in policies. The approach may differ, but the policies are all amazing. Right? We all have to work and improve them. Thank you, Shahzad. We understand. Shamim, over to you. Thank you. So, like I said, there's some of the items that Shahzad just mentioned. Obviously, overlap करेंगे तकरीबन सारे contestants के. Digital Pakistan Group का अपना एक manifesto है जिसमें सारी बातें आती हैं और a lot of them Abdul Aziz spoke about, Mujib spoke about. I'm primarily going to talk more about on the skill side. But before that, कुछ चीजें जो I want to highlight that is very important for the existence of a strong CEC this year is number one, जिस तरह से बाकी contestants ने कहा, continuation and consistency of programs and policies ये बहुत important है. In the last we've seen that it is highly important कि जो हमारे stands हैं in terms of STZ, in terms of tax, in terms of cashback rewards, उस पे हम जो है उन programs को उन policies को हम पीछे ना roll back ना होने दें, so that continuation and consistency is very important. Accountability I feel is very important because हम सिर्फ accountability की बात उस वक्त करते हैं जब हम elections में आते हैं, तो हम कहते हैं जी बताएं किसने क्या किया. But I think throughout the CEC, throughout your tenure, जब आप meeting minutes publish करते हैं, जब आप meetings करते हैं, जब आप कोई execution करते हैं, तो I think accountability is very important at the CEC level, and that's one of the things that our group is very strong on. तीसरी चीज ये है कि जैसे शहजाद ने बात की, diversity in the CEC in terms of size, company के size doesn't matter, subsectors होने चाहिए, different subsectors होने चाहिए, gender की diversity भी होनी चाहिए, which I believe that ours is the only group जिसमें जो है हम उसमें भी balance लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं. एक और चीज जो मैंने कल हमारा एक AM हो रहा था, उसमें हमने रहीम यार खान से एक साहब आए हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, and I think that gave us some ideas about जो हम skills की बात करते हैं, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को focus कर रहे होते हैं. I think we also need to move this towards tier 2 cities जो हम सब committees बना रहे होते हैं, तो सब कमिटीज का फोकस भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद होता है. आई थिंक उन सब कमिटीज के भी चैप्टर्स बनने चाहिए उन टियर 2 सिटीज में, ताकि हम उनको भी जो है मेन स्ट्रीम में ला सकें. आई फेल्ट दैट वाज समथिंग दैट वी वांट टू ऐड टू आवर मैनिफेस्टो एज वेल. And then obviously the last but not the important the least, people who know me के स्किल्स का मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है. पिछले 2 साल से मैं स्किल्स कमेटी लीड कर रही हूँ. उससे पहले मेरा तकरीबन 2 डेकेड का स्किल्स ट्रेनिंग का और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का DNI का जो है पोर्टफोलियो है.
So I think from a skills perspective, दो areas हैं, सबने बात की academia gap की, academia industry gap की, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. पिछले 2 साल में हमने कुछ काम किया भी है with MOIT, with P SHA CEC. We want to blow that up and take it to different cities, make it bigger. अभी हमने कुछ 2200-2300 बच्चों की training करवाई. We want to take it to 40,000, 50,000 students in the next year, in the next few years. Similarly, जो graduates हैं या non-graduates हैं, उनकी training पे focus करने की ज़रूरत है, because like a lot of the candidates said that the delivery side is always obviously tied with आपका skilled resources, skilled human resources. So अगर आप उधर उसको नहीं बढ़ाएंगे तो you just cannot is for boot camps is by the industry for the industry. So we make sure that we involve the industry to train these resources and do trainings of trainers as well. And at the end, the industry hires them. Thank you so much, Osman. Just one. When I was given the opportunity to basically build a new diversity committee in Pasha, we came up with the framework, DNI framework, जिसको हमने 1 साल लगाया और हमने उसको बनाया है. इंशाल्लाह अगर आगे opportunity मिलेगी तो we will make sure that we help industry and the companies implement the DNI into their organizations to improve their diversity ratio. So yeah, that's all. Thank you. We have one manifesto और we have a diverse background. कोई product company है, कोई skills background है, diversity का background है, multinational का background है. जितनी projects आप देखेंगे बड़े special technology zone, export marketing fund, skills के लिए जो fund PSCB को मिला, cash rewards और government policy के हवाले से ये सारे जो projects हैं वो conceived by me in Prime Minister's Task Force on IT and Telecom, closely working with our industry folks. बीच में शहजाद शाहिद, बरकान, डॉक्टर शुएब, काफ़ी सीनियर लोगों के साथ मिलके. बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारी सारी कॉमन मैनिफेस्टोज हैं. मगर एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, इंडिविजुअल कंपनी चलाना और एक आपकी अपनी सब सेक्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर पूरी इंडस्ट्री लेवल व्यू, नेशनल लेवल व्यू, गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है और ये आपको सालों के काम के मेहनत के बाद पता चलता है. सो आई वांट टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर व्यू. अगले 15 साल की क्या विजन देनी है, ब्रॉड व्यू, और इकोसिस्टम की हम बात करें. बाद 2 जॉब्स कर रहे हैं और इश्यूज हैं, कोचिंग चल रही है कंपनीज की, लोग कहते हैं ग्रे लिस्ट बना दो, व्हाइट लिस्ट बना दो. हम प्रॉब्लम्स की तो बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट कैसे काम करती है. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडिया है, आर्बिट्रेशन बॉडी का पाशा बनेगी और आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पाशा क्या आर्बिट्रेटर आएगा. तो कोई भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस होंगी, पाशा विल हैव अ लीगल पोजीशन कि वो फैसला कर सके उसके ऊपर. इसी तरह रिमोट वर्कर्स हैं, टैक्स उनको नहीं लग रहा, आपके वर्कर्स को टैक्स लग रहा है. जब तक ये गवर्नमेंट, लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट की हमें जरूरत नहीं है, मगर गवर्नमेंट नहीं डील कर रही, तो आपकी भी कंपनियों में जो 2-2 लाख के ऊपर के लोग हैं, आप उनको बाहर से एम्प्लॉय करना शुरू कर रहे हैं. होगा क्या, कल को आप इलीगल चले जाएंगे, आपको नोटिस आएंगे. हमें गवर्नमेंट को इनकी रिमोट वर्कर और लोकल वर्कर, ये टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, फिक्स करना है. हम इस वक्त जो बड़ी बात मैं करने वाला हूँ, अयूब एरा के जैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए थे, आज तक हमारे पे वो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं. EOBI वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, आप रिश्वतें दे के बचते हैं. हमें नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म्स चाहिए और पूरे मुल्क के लॉज को चेंज करने की जरूरत है. एंड आई कैन टेल यू, हम वो करवा सकते हैं. एग्जाम्पल छोटी सी के मार्केटिंग के लिए क्यों हमें स्टॉल पे जाने की जरूरत है, क्यों गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन पेपर क्लिक के लिए क्यों नहीं फंडिंग दे सकती, क्यों नहीं हम अपनी नीश कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैंने अकेले नहीं जाना है, मैं जाके अपनी क्लेम कर सकता पैसे. तो ये नए मॉडल, जब तक नॉलेज इकोनॉमी के लिए स्पेशल कुछ ओपनिंग नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, सो वी विल वर्क ऑन दैट. और हम उसके लिए, हमने पहले भी बहुत बड़ी विजन करके दिखाई,
जब लोग कहते थे नहीं हो सकता, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पार्लियामेंट से अप्रूव कराया, लॉ बनवाया, अथॉरिटी बनवाई, 1000 एकड़ लैंड एलोकेट करवाई, इसी तरह 5 अरब का कैश रिवॉर्ड एलोकेट करवाया, ये चीजें, और 2 अरब पीएसईबी को दिलवाया जिनका बजट सिर्फ 10 करोड़ होता था। तो ये इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं, अब उसको एग्जीक्यूट भी करवा के दे सकते हैं आपको, और अब ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी करवा सकते हैं। हमें सिस्टम की जड़ों का पता चल गया, इन प्रॉब्लम्स की जड़ें क्या हैं, और हम रूट कॉज में जाके एक होलिस्टिक सोल्यूशन आपको देंगे। और उसके लिए ये ग्रुप ऐसा हमने जो बनाया डाइवर्स, वी आर लाइक माइंडेड एंड वी विल इंश्योर कि वो बिग पिक्चर लॉन्ग टर्म व्यू हम दें। और ऑफ कोर्स वी हैव अदर पीपल, शहजाद शाहिद जैसे हैं, काफी दूसरे लोग हैं, मेरी बात हुई हारिस से, दे हैव ब्रिलियंट आइडियाज, और वी वुड वांट टू वर्क विद देम एज वेल। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं 2 मिनट में ख़त्म कर लूँ इंशाल्लाह। मेरे पास सबसे पहला एक मेरे मैनिफेस्टो में 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 3 से 4 वो कवर करूंगा। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि गेम डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट की फैक्ट्री बनाया जाए पाकिस्तान को। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अभी $2 बिलियन की इंडिया कमाता है, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त। इट विल ग्रो अप टू 530 बिलियन, 570 बिलियन विद इन कपल ऑफ ईयर्स। तो अगर आज हम इस पे फोकस करेंगे तो हम अपने स्टूडियोज को वो रीच दें, वो रिसोर्सेज दें, तो हम वो अचीव कर सकते हैं। बाय 2025 2 बिलियन, 3 बिलियन, अप टू 5 बिलियन में पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह ताला। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हम हर उस कंपनी को इंटरैक्ट करें जो 23,000 आउट ऑफ 23,000 आईटी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को फोकस करा जाए जिनका रेवेन्यू सिर्फ $1 लाख सालाना है। उनको ट्रेन करके ग्रो करके 1 मिलियन पे लाया जाए। हमारे पास अमेजिंग सीईओज हैं जो डेडिकेटेडली उनकी ट्रेनिंग करें, उनको टाइम दें, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन से, अगर ये मैं मिसाल देता हूँ, नंबर हम 500 कंपनीज ही ले लेते हैं और वो $1 लाख से $1 मिलियन पे चली जाती हैं। इट विल इंक्लूड लाइक तकरीबन हम ऐड ऑन कर लेंगे $500 मिलियन की अपने इकोनॉमी में। ये फॉरेन से हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी को अगर आप ग्रोथ मिलने लगती है तो फिर वो स्काई इज द लिमिट। एक जो मेरे पास एक और आइडिया वो है कि अली बाबा को कहा जाता है दुनिया का गेटवे टू चाइना। हमने इंपोर्ट करनी है कोई चीज मंगवानी है, हमने चाइना से मंगवानी, तो हमें अली बाबा नजर आता है सबसे पहले। मैं चाहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री का अली बाबा बनाया जाए। अली बाबा हो, उसमें जितनी आईटी कंपनीज हमारी हैं सारी लिस्ट हो, जस्ट लाइक अपवर्क में होती हैं, उसी तरह से काम आए। जब हमारी ब्रांड पाकिस्तान की कमेटी, ये जमील भाई ने बहुत जबरदस्त बात की कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनिक हमारे पास अवेलेबल है। हम जब हुक क्रिएट करते हैं ना, किसी भी चीज पे पैसा लगाते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज लगाते हैं, हम हुक तो क्रिएट कर देते हैं, पीछे प्रोजेक्ट कोई नहीं आता। जो 10 कंपनीज बाहर जाके मार्केटिंग करती हैं, सब उन्हें ही प्रोजेक्ट मिलते हैं। जो पीछे 500 बैठी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो उस हुक से क्या होगा कि हमने एक दफा इंटरैक्ट कर लिया कि जी हमारी ये वेबसाइट है, गेटवे टू पाकिस्तान, इससे पाशा की वैसी मेंबरशिप का साइज 10,000 पे चला जाएगा इंशाल्लाह। और जो सारे दोस्तों ने पॉलिसी की बात की, हमने बहुत पॉलिसी बना के देख ली, तब भी टैक्स लग गया, तब भी गवर्नमेंट टेढ़ी की टेढ़ी रही। आई एम सो सॉरी टू से दैट। इसको माजरत के साथ में बता रहा हूँ आपको। अगर सिर्फ हम एक चीज मांग लें, भाई तुम हमें ज़िबा भी कर दो ना, लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंट 15 साल के लिए लॉक कर दो। अगर 15 साल के लिए पॉलिसी लॉक कर देंगे ना, तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। पिछले 6 महीने में 3 दफा पॉलिसी चेंज हो गई है और डॉलर संभल नहीं रहा है इनसे। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि सस्टेनेंस लेके आए, सस्टेनेबिलिटी हो। और लास्ट पॉइंट मेरा ये था कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। मेरे पीछे आप गुलदस्ता देख रहे हैं पूरी कंपनीज का, ये सारी कंपनीज ना प्रोडक्ट कंपनीज हैं। अगर हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कंपनीज बनाना शुरू करें तो इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ये हम 10 बिलियन 20 बिलियन का विजन छोड़ देंगे। ट्रस्ट मी, अगले 10 साल में हम, ये रेहान अल्लाह वाला भाई जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर ला सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट का मजा चख लिया हमने। हम सर्विसेज में ना, टू बी आई एम सो सॉरी, लेकिन सर्विसेज के काम में ना गवर्नमेंट का विजन ये कि इतनी रिसोर्सेज बना दो और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम इतने $1 बिलियन ले आएंगे। एक बहुत फेमस इंडियन मूवी का है वो तेजा कैरेक्टर, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। वो कहता है अंडे, इतने मुर्गियां अंडे देंगी, फिर उससे इतने चूजे आएंगे। हम इतनी रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे? यूनिवर्सिटीज इतनी रिसोर्सेज ही नहीं निकालती। आप जरा 10 साल में देख लें कितनी रिसोर्सेज हम ला सकते हैं। 25 लाख रिसोर्स चाहिए, इतनी तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट नहीं देना है। तो हमें इन सब चीजों पे सोचना चाहिए, रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए और कोशिश करें कि पैसा लाएं। हमारी कंपनीज को पैसे की नीड है, चाहे वो लोकल मार्केट से हम लेके आए, चाहे वो बाहर से लाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सो एज यू नो, हमारा जो डिजिटल पाकिस्तान का जो मैनिफेस्टो है, उसको बनाते हुए एक बेसिक आइडिया ये था कि वी ऑल, इंडिविजुअल मैनिफेस्टो जब हम बनाते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं होता।
The way we have designed it, we have thought about creating our 15 to 20-year vision. And to begin with, we have done our 5 to 7 year objectives. So हमारे कोई 6 main key objectives हैं और currently उनके अंदर total कोई 36 different sub objectives हैं. और right now as we go along, तो इंशाल्लाह अगर इसे हम implement करेंगे तो हम इसको properly एक OKRs के format में लाएंगे, जिसके अंदर हम एक पूरा plan बनाएंगे next 5 years का, और फिर इंडस्ट्री के साथ मिलके जो विजन है इसको हम सॉलिडिफाई करेंगे. व्हाट वी वांट इज कि जो कंटिन्यूटी हमने की है या जो अभी तक विंस की हैं पिछले 5 साल के अंदर, उसमें मैं एचआर कमेटी में रहा हूं और एचआर कमेटी का भी हिस्सा हूं 3-4 साल से, और शहजाद भाई और डॉक्टर अमीन भाई और सैयद बरकान, डॉक्टर शैब अब उसका हिस्सा हैं, बदर उसका हिस्सा हैं. इन सब के साथ मिलके वन ऑफ द की थिंग्स वी डिड वाज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. क्योंकि आप जितना मर्जी वॉलंटियर वर्क कर लें, लेकिन आप अगर इसे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते. तो जो हमारी मैनिफेस्टो है उसके अंदर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैं चंद बात करना चाहूँगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं. लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र में सबसे बड़ा है वो ग्रोथ चैलेंज, कि वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई ऑन हाउ टू स्केल services or products, and I bring that experience with me of scaling up products and services at international level as well as local level. So उसमें मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे CEOs हैं, जो हमारी लीडरशिप है, अगर हम उनको ट्रेन करें ग्रोथ के ऊपर. अमेरिका में US के अंदर देयर आर डिफरेंट कंपनीज जिनको ट्रेन किया जाता है लीडर्स को $1 से $2 मिलियन तक ले जाने के लिए, $2 से $10 मिलियन के लिए ले जाने के लिए अलग एग्जीक्यूटिव टीम्स होती हैं. सो वी नीड टू बिल्ड दैट level of leadership within Pasha, without which we cannot think big. So we have to think big. हम कोई छोटी छोटी जब तक इंडिविजुअल सोचते रहेंगे और बड़ा नहीं सोचेंगे और बड़ी विजन नहीं क्रिएट करेंगे और सारी उस विजन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जितने ब्रिलियंट आइडिया सब दे रहे हैं, आई थिंक जब तक हम सबको इकट्ठा करके एक बड़ी विजन नहीं क्रिएट करेंगे और उसको उसके मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे. सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक श्योर दैट हम डाइग्रेस ना हो, हम चेंज ना करें इस जो हमने जो अभी इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जो टीम बिल्ड की है पाशा के अंदर, और जो काम हो रहा है अभी तक विंस हो रही हैं, हम लूज ना करें. जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हम कुछ वॉर्स जो हैं इस साल हमने लूज की हैं और वो डिफरेंट चैलेंजेस थे, और मेरे ख्याल में वी हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड कंटिन्यू कीप पुशिंग इन द राइट डायरेक्शन. सो या, थैंक यू तला. So thank you for going through the second leg of the. Now we are moving towards, we are a bit ahead. I think we lost the moderator. The moderator has left the house. I think there's some internet connectivity challenge. रेहान भाई इंटरनेट सही वाला लगवाना पड़ेगा आपको फिर. हाँ जी, sorry, we're back. So we're a bit beyond time, guys. So we're moving towards the third step where I'll be asking one question each, and we would like to ensure that we answer quickly, crisply, and so we can finish on time. So starting again with the contestant number 1, Mr. Abdul Aziz. The questions of उस्मान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैड रिक्वेस्टेड विद मॉडरेटर के मेरी वालदा की जो है ना वो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा अर्ली निकलना है. तो आई थिंक हीरा मेरे ख्याल में वो शायद आ नहीं रही. जी मैंने कम्युनिकेट कर दिया था उस्मान को. If you want to leave, so you can. We'll start with you. Guys, I'm very sorry, मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट से निकलना है वालदा की. No issues. We'll start with you, Azam. Thank you. So my question to you will be, let's move on. My question to you will be, what will be your process to emphasize product-based export? Why it has not happened till now? Give us the reasons. And number 3, what special you will do this time to achieve it? Okay, when we are talking about product export, actually what I think कि
अभी तक जो है हमने देखा है कि एक्सपोर्ट सारी मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो सर्विस ओरिएंटेड चल रही है हमारे पास. When I created my first product in 2013, which is the information security product, and I got runner-up, trophy from Pasha ICT Awards. At that time, I was very much convinced कि जी product के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए. But unfortunately, over the period of 3 to 4 years, I wasn't able to continue with that project, and my product got shelved. After some time, I see same product on internet selling in $200 per pieces. Then I realized कि खाली प्रोडक्ट बना लेना या आइडिया दे लेना जो है वो उससे काम नहीं चलेगा. हमें जो है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च टेक्निकली और फिर उसकी बिजनेस रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि प्रोडक्ट बना लेना बहुत आसान होता है, प्रोडक्ट को पेच करना, प्रोडक्ट को मार्केट करना, प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक करती है. आई नो अब सो मैनी प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरिया जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे. तो वी हैव टू क्रिएट सम इकोसिस्टम वेयर वी कैन बिल्ड मेंटोरशिप, और कुछ ऐसा आशा की तरफ से जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए जिसके अंदर हम उन लोगों को, उन एंटरप्रेन्योर को जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो बिजनेस वाइज किस तरह से पेश किया जा सकता है, किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, कि इसके ऊपर काम होना चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की पिचिंग जो है मेरे नज़रिए के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बेहतरीन रास्ता इस वक्त हमारे पास जो है वो डेलीगेशन और इंटरनेशनल एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन है. हम जितना अच्छा अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, जैसे कि पिछले 2 साल से हमने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पाशा जो है वो वर्क कर रहा है. मैं इसमें सॉरी अगर कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, बट क्रेडिट शुड गो टू ज़ुएब खान जिन्होंने डेलीगेट्स लीड किए और एग्जीबिशंस जो है वो मैनेज कर रहे हैं पाशा की तरफ से. मैं उनके साथ भी वर्किंग कर रहा हूँ, और आप लोगों में उस्मान भाई भी इसके विटनेस होंगे जब वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में थे. तो इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी काम हुआ है, पाशा की तरफ से भी काम हुआ है. हम इसको पुश कर रहे हैं और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए. और इसके लिए एग्जीबिशन में जाने से पहले जितने भी एग्जीबिटर हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे वो सर्विस बेस हो, उनका एक सेशन, एक मेंटरिंग सेशन जो है वो सीनियर्स के साथ होना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को किसी सर्टेन मार्केट में पिच करते हो. क्योंकि आई थिंक एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट डायनामिक्स और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट हो सकती है. तो बेहतर ये है कि वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी उस सेक्टर में मौजूद है ऑलरेडी, उनको कांटेक्ट किया जाए और उनसे अंडरस्टैंडिंग ली जाए, और इस तरह का कोई जो है वो लिंक क्रिएट किया जाए जिससे जो है वो हमारे एग्जीबिटर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो बेहतर एक्सपोजर मिल सके. थैंक यू सो मच. Have you completed your answer? I think time is up. Or Thank you. do I have? Yeah. You have completed your answer, haven't you? It's okay with me. Okay. Azam bhai, please Thank go you. attend to your mother. I'm sorry guys. I have to leave for a Please. doctor appointment for my mother. Please actually go attend to her. Thank you so much. Our prayers with you. Thank you. So we'll move on to our program. Abdul Aziz Saab, my question to you is, what will be the steps towards ensuring that Made in Pakistan becomes a reality? What are the pitfalls in that, and who are the stakeholders, and how will you convince them? The first most important thing is people need to understand what does the product domain mean. First, I would tell you ये बहुत patience का काम है, perseverance का काम है. Product unlike services, मैं आपको बताऊं कि बड़ा temptation होती है when you are doing both services and products. Initially, it's very difficult to refuse service contracts, which we had to do. जब हमने बिल्कुल decide कर लिया था we will be doing products, so ये mindset है product का. So we need to make people understand. पहले अगर आपने development करनी है,
कि प्रोडक्ट बिजनेस पेशेंस का काम है, ये साइक्लिक है, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम टू डेवलप। उसके बाद जब मेक इन पाकिस्तान प्रमोट करने की बात है, मेरी जो अप्रोच थी, और टू सम एक्सटेंट आई एम सक्सेसफुल, कि इनसाइड आउट अप्रोच है। यानी आई बिलीव कि सबसे पहले आप अपनी लोकल एनवायरनमेंट में, यानी विद इन द कंट्री अगर आप सक्सेसफुल होंगे और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को दिखा सकेंगे, तो फिर उसी प्रोडक्ट को लेकर आप बाहर भी जा सकेंगे। और वो मेक इन पाकिस्तान का जो आप एक नारा लगा रहे हैं वो बड़ा स्ट्रांग होगा जब आप कह सकेंगे कि जी मेरे 2, 4, 5, 10 हज़ार कस्टमर बेस मेरी अपनी कंट्री में है और यही चीज अब मैं पिच कर रहा हूँ आउटसाइड, राइट। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मेरी जो प्रोडक्ट है, अब हम उसको डिफरेंट फार ईस्ट में, ईस्ट अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में हमारी पेनिट्रेशन सिर्फ इसलिए हो रही है कि वी हैव बिल्ट अ ब्रांड। सिर्फ एक चीज जो हमें मुश्किल हो रही है वो ब्रांड पाकिस्तान का मसला है। इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो में भी हमने उस पर जोर दिया है, अनलेस पाकिस्तान ब्रांड। आपको मैं बताऊं कि हमारा पहले स्लोगन होता था कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान नंबर 1 सॉफ्टवेयर इन दिस। तो देन आई रियलाइज्ड कुछ साल पहले कि ये मैं अब एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि we need not say Pakistan's number 1, we are marketing to global markets। मेरी इंडियन काउंटर पार्ट से बात हो रही थी और वो मुझे कहते हैं अगर आप इस स्लोगन को लेकर चलेंगे तो इंडिया में तो नहीं आप सॉफ्टवेयर बेच सकते, राइट। सो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स कि जब आप एक लोकल प्रोडक्ट को लेकर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो उसमें क्या डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ब्रांड पाकिस्तान को जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स तो हमारे कंट्री लेवल के हैं, जिससे पाकिस्तान का ब्रांड बेहतर हो। और फिर हमारे अपनी जो एफर्ट्स हैं उसकी तरफ के हम अब लोकली स्ट्रॉन्ग हो और फिर वी मूव आउटसाइड, तो डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। Have I missed something? What are the stakeholders? What are the stakeholders? What are the pitfalls up till now? What were the hurdles up till now, and how will you address them? जी अगर आप हर्डल्स की बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी हर्डल हमारी गवर्नमेंट है। हम और उसके लिए पॉलिसी एडवोकेसी की बहुत जरूरत है। मेरा अब तक जो एक्सपीरियंस पाशा के साथ रहा है, अगर आप करें, वो ज्यादातर टैक्सेशन मैटर्स में रहा है। I attended different meetings with PRA, I attended meetings with FPR, इसलिए कि वो मेरा पर्सनल पेन पॉइंट भी था। जो एक्सपोर्ट में तो शायद इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, बट लोकल बिजनेसेस में, जैसा अभी और लोगों ने भी मेंशन किया कि डिफरेंट एजेंसीज हैं, यू लर्न टू लिव विद देम, लेकिन छोटे छोटे मसले तो हल हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोकल पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हाउ कैन यू ग्रो योर बिजनेस? तो हर्डल्स की जहां तक आप बात करते हैं वो तो ये। और जो एक पिटफॉल्स की बात है, लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? मेरे एक दोस्त हैं, वो भी पाशा की कंपनी है, ईस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। वो मुझे एक बार कहते हैं, अजीज भाई मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, शोकेस में पड़ी हुई है, तो 5, 7, 8 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उनको इस तरह चला नहीं सके, आपने इतने हजारों लाइसेंस बेच लिए। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो कैज़म को क्रॉस करना की एफर्ट है ना, वो इनिशियल जो आपका टेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड sorry, I have to move on to the next candidate, please. Sure, I'm so sure. sorry. Sure. So the next candidate, Mr. Mohsen Ali. Mohsen, what is the skills gap? How big it is in numbers? What do you expect? What is the budget that you would require to fill this, and how will you achieve it? Who will be your partners, stakeholders, and opponents on this? Right. I think very valid question, Osman. So right now we have roughly 600 to 700,000 skilled resource available readily in a good shape and form. However, there is a huge gap when we talk about the supply. So there is a demand and there is a supply, right? There is a huge gap. There is a problem in demand in some areas, but right now the question is pertaining to the supply, so I'll specifically touch upon.
So I spoke about garbage in, garbage out. So this is problem number one, which needs to be addressed right away. We should declare, हमें emergency declare करनी होगी. We need to sit with the right authorities, with the decision makers, with the policy makers. Like, ये specific area इसके अंदर आपको emergency declare करें, academia आए. So it should be a collaboration approach होगी. उसमें सिर्फ एक party नहीं है जो कि इस problem को address कर सकती है. उसमें हमारी जैसी companies, we need boot camps, we need academia, we need government, and we need the big groups, groups with a deep pocket. Boot camp को कौन sponsor करेगा? Right? This is a problem. This is a question. And you know, आखिर में आके boot camp की कोई बहुत बातें हुई पिछले 2 सालों में, and result कुछ नहीं हुआ, unfortunately, right? So maybe हमें government के अलावा भी देखना होगा. We need to go to the investors available in Pakistan. Look, if you want to invest today, this will be the return. I think this should be part of our approach, जो कि आज के दिन मेरे ख्याल में missing है. Academia के अंदर जो boot camp वाला concept है, हमें उसको enhance करना होगा. We need to invest, all of us collectively. पैसा कितना चाहिए उसको मैं इस तरह बोलूँगा कि whatever we are doing, it should be a profit making activity for us. Let's say हमें से एक company boot camp ये boot camp के ऊपर अगर अपना time energies invest करती हैं तो at the end of the day they should be able to make money. वो government से पैसा आए, subsidies the problem. I think हमें subsidies की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए. But ecosystem इस तरीके का होना चाहिए. The system should able to support that particular setup of Shamim or XYZ ताकि sustainable. हमारा problem यही रहता है कि हम subsidies पे चलने वाली overall nation है और आखिर में आके जब problem आता है, subsidy रुकती है, पूरा collapse हो जाता है. For sustainability, the ecosystem should be able to address a long-term problem by adding value, by engaging the right people. Mohsin, what budget do you expect for this? And how many people would you be able to train per annum with the per annum budget? Can you mention that? So again, देखिए budget की अगर हम बात करें, हमारे ख्याल में जो अभी supply question है, we are talking about roughly I believe it will go into the millions जो हम बात कर रहे हैं to address our vision. So our vision is, let's say we want to have a $15-20 million ahead in next 3-4 years. इसकी हम export करना चाह रहे हैं. उस supply को address करने के लिए we need tens of thousands resources. Train the trainer concept should be applicable to all of us क्योंकि इतने mass scale के ऊपर हम काम नहीं कर सकेंगे. उनकी जो training है, that should be subsidized. The budget should be in the shape of some shape and form. I think exact budget की अगर हम उनसे पूछें, it's a very controversial question कि किस specific area की हम बात कर रहे हैं. अगर हम emerging technologies की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा investment हमें करने की ज़रूरत है. अगर हम routine में जो easily available technologies हैं, वहाँ पे इतना amount हमें नहीं चाहिए होगा. वहाँ पे enhancement of the skills चाहिए होगी. वहाँ पे teachers की capability बढ़ाने की. It will be a mix and match. Existing academia को हमें अपने साथ लेकर चलना होगा और they should be part of our ecosystem, which I believe वहाँ पे थोड़ा सा disconnect है. And then the boot camps. Thank you, Mohsin. I have to move on for the next. Just about expanding the export for custom software development. Now, what is your expectation? What is the size of dollars? And what will be your step-by-step plan to ensuring that would happen? Thank you. It's one very relevant questions, and the best actually associated with so many things. One of the best thing which already has been discussed by that all these things, the more export actually have in-house. Okay, that's one thing. I believe like right now on 2.7, 2.8 and going up to 3 to 5 billion cannot be an unrealistic target, but it all needs some extra support from all 4 sides first. Okay, with the same capacity, we are earning this much. Now we have a big chunk of freelancers available around Pakistan, which is not a team so far, which is not a company so far. We need to make sure that we are shifting all of them in a form of a company, getting them registered with P SHA CEC, getting them registered with other associations like FBR and all of them, channelizing them and getting all that money together in one single targeted lane.
That is one thing. The other part, again, मैं जब बात करता हूँ services की, so by 2025 5 billion तक जाना cannot be an issue because we have a bigger chunk. I discussed earlier कि हमारे पास एक gaming का section है जो कि बिल्कुल untapped पड़ा हुआ है. ठीक है, हमारे पास इस टाइम पे प्रोडक्ट से एक सेक्शन पड़ा हुआ है जो कि अभी fully marketed नहीं है. And going to reach that target involves so many things, where 1,000 resources. Okay, we are right now just to give a bit of more details to it. Every single based on the circumstances we have, that is around nearly $3,000 per person per month. Okay, just multiply that years. How to generate is totally dependent on how many boot camps we have, how many people are getting trained, what sort of technologies we're looking at. If we're still looking at developing apps and developing mean months, I'm sorry, unless and until we're not diving into something which is the requirement of the day, that is AR, VR, MR, data sciences, AI, ML, NLP. If you're not diving into that one space, we will stand again in the same arena क्योंकि हम पाकिस्तान में हमेशा 10 साल 5 साल पीछे रहते हैं. That's the plan, and the plan is to make sure we have resources available as soon as we have a good scale of resources available, which Mohsin Bhai said very clearly that it's an emergency. Declare the emergency, have resources, 4,000 to 5,000 resources coming on board with the companies. I don't care which company. That company needs to be performing. That's all what is required at this point of time. And yes, that is the only way we can make 5 billion up there. We have to move on to Jamil. Jamil, my question to you would be, what's your framework for facilitating product companies? And what measurable benefits will it bring to the exports and the overall industry? So you have to give us numbers in terms of dollars, and you have to give us time and stakeholders and the activities that you require from the stakeholders over this period. Over to you. Thank you, Osman. The question is quite broad, and that entails a lot of different variables. Again, knowing that PASHA is basically an act of a CEC or extended subcommittees, ये जो numbers वाली game है, that all depends on कि कितना गुड़ डालेंगे और कितना गुड़ निकलेगा. लेकिन generally speaking, what is possible within the framework? देखिए, प्रोडक्ट के अंदर आपने पहले भी क्वेश्चन किया और आजम ने उसका आंसर दिया कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री कैसे रही over the last 20 years. If we see, हम लोग सर्विसेज कंपनी से इवॉल्व हुए, सर्विसेज कंपनी थोड़े पैसे डालने शुरू किए, we turned out to be the earliest इन्वेस्टर्स में से कुछ और आगे गेम चली तो फैमिली ऑफिसेज आना शुरू हो गए, फैमिली ऑफिसेज के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है. पाशा का आज तक वो फोकस शायद नहीं रहा क्योंकि और बहुत सारे इश्यूज रहे. हम लोग स्टार्टअप कल्चर में, इन्वेस्टमेंट कल्चर में, इन सब चीजों में अपने आप को एम्बेड नहीं कर सके एज पाशा. Pasha needs to get into that. We need to bring all the investor community together. We need to bring the startup community together. We need to enable sort of a thinking around how these products can go forward. Software as a service is a great framework. आप पाकिस्तान से बैठ के मतलब तोपे चला सकते हैं. क्वेश्चन ये क्या हमारे पास 100 कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अपने आप को ग्रो कर सकें, अगले 3 साल में $0 से $1 मिलियन वो ला सकती हैं? अगर ला सकती हैं तो we are simply talking about $100 million coming in through those services every month or every year, right? So this is how we need to rethink and calculate this whole strategy. In terms of branding, I think हमें इन प्रोडक्ट कंपनीज और सर्विसेज कंपनीज को ग्लोबल ले जाने की जरूरत है, ज्यादा आई बॉल्स क्रिएट करने की जरूरत है, दुनिया में डिफरेंट मुल्कों को हमें टैप इन करने की जरूरत है जहां पर इस वक्त एक मतलब डिमांड एग्जिस्ट करती है. जब तक हम लोगों के सामने नहीं जाएंगे, लोग हमें काम नहीं देंगे. वी नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, वी नीड टू क्रिएट एंड रेज दोस आई बॉल्स एंड वी नीड टू बी पार्ट ऑफ दोस इवेंट्स, एक्टिविटीज, delegations, and above all we need to lobby together. यार पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, जहां भी जाओ यार उस पाकिस्तानी से नहीं मिलना, उसके साथ काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो. If we don't come together, we don't piggyback on the established Pakistanis abroad, we cannot grow. Whether this is liked by people or not,
दुनिया में एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, everybody is bad unless proven good, or everybody is good unless proven bad. I think we need to go a step forward. Everybody is good unless proven bad. Even if proven bad, there is still goodness in them, and we need to follow that goodness. And I think Pakistan has to think from a sharing economy perspective. अगर हम शेयरिंग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आगे नहीं चलेंगे, दुनिया शेयरिंग इकोनॉमी के ऊपर ग्रो की है पिछले 10-15 साल के अंदर. एवरीबॉडी नोज इट. If we do not share, we do not open hearts, we do not support each other, we do not think together, this industry is not going to go. Last comment. Policies are very important. We need to think from that perspective. We need to build frameworks. We need to push them continuously to the governments. लेकिन देखें, अगर policies political stability से आगे चलेंगी, political stability हमारी ऊपर नीचे चल रही है, political stability ऊपर होगी, policy खराब होगी. Question is, shall we shut down the business? No. We have to go forward. We need to build and sell. If we can sell, we can actually create that impact on the government, like the textile sector and like the manufacturing sector, like the automobiles. उनका पाई बहुत बड़ा है, वो बड़ा पाई लेके जाते हैं, अपने आप को लॉबी करते हैं और हुकूमत के ऊपर जाके बैठ जाते हैं. हमारा पाई छोटा है, हम जब हुकूमत के पास जाते हैं वो हमें लिफ्ट नहीं कराते हैं, हम पीछे रह जाते हैं. We need to come together, create that lobbying system, create that pie, make it bigger, and then go back to the government and pressure them and push them. This is all coming through togetherness. So I think this is my message to all. We need to come together. We need to push it all through. Global eyeballs, very, very, very important. I think businesses can do much if they are able to earn anything, and then they have the ability to provide the supply. मैं कहता हूँ आज मैं आपको $1 million का बिजनेस लाके देता हूँ, आप 10 बंदों की कंपनी, आप उल्टे होके 100 बंदा पूरा करेंगे जैसे भी होगा, क्योंकि बिजनेस आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है. अगर आपकी टेबल पे बिजनेस नहीं होगा, आप 100 बंदा लेके बैठे रहे अपना सर पीटते रहेंगे. Thank you so much. Mujib, over to you. You mentioned about rationalization of taxation on local employees and the remote workers. Now, how will you ensure that if this gets implemented, it will not be used against these smaller players and the freelancers? And what do you think will be the benefit to it for the industry? And do you think the industry is thinking too narrow on this subject? Over to you. Very interesting, Osman. My colleague Syed, I think, mentioned that specifically, but I'll take up the response to it. I think we have to, as was mentioned earlier, we have to come up with a framework that ensures equitable distribution of responsibility and accountability, whether it is to remote workers, freelancers, or to employed resources that companies go and hire. Right now, the disparity is happening because if I hire a resource and I'm a registered entity in the country, it can be taxed up to 25 or 30%, whereas in certain cases for freelancers or people who are remote hired, they get away with no taxation because they are remitting money. So if we can build a framework that does that in an equitable way, and again, देखिए मैं पहले भी मैंने जिक्र किया था, we are not the first country in the world trying to solve this problem. There are best practices out there. उसमें registration एक mechanism हो सकता है. उस्मान जब आप PSEB में थे, ये बातचीत हुई थी कि हम किसी किस्म की very easy, very online, very sort of उसमें आप कोई involvement ना रखें किसी regulator की, और आप एक मैकेनिज्म बनाएं जिससे आपके पास विजिबिलिटी आए. नंबर 1. नंबर 2, आपका एक और प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा कि आपको जो नंबर्स सही भी डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, आई थिंक वी थ्रो डार्ट्स अगेंस्ट द वॉल के 2.8 बिलियन है, 3.1 बिलियन है, 2.5 बिलियन है, और उसमें डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइड ऑफ द बेड वी ऑल गॉटन आउट ऑफ दैट डे, वी पिक दैट नंबर. आपकी विजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट एक्विटी दैट an employed or registered business can enjoy, as well as a freelancer or remote worker. Because देखें, आपका एक बात तो क्लियर है, आप उसको रोक तो नहीं सकते, राइट? आप उसको रोकेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि आप अपने टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को कम कर रहे हैं. In the post-COVID economy, everywhere around the world, organizations are tapping into the global workforce. टैलेंट की जो कमी है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह पर. मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा अपने भाई से जिन्होंने पहले ये बात की कि पाकिस्तान में सप्लाई साइड, मेरे ख्याल में मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है,
हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हमने एक दफा सर्वे किया कि जी पाकिस्तान में कितने लोग, हर कंपनी को लोग चाहिए, धंधा है उनके पास, चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी है चाहे वो सर्विस कंपनी है, उनको लोग चाहिए। तो लोग क्या करेंगे? हम खुद, मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूं, हमारे पास 1700 रिसोर्सेज हैं, हमने पाकिस्तान में स्टाफ ऑगमेंटेशन की हुई है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन उस्मान, I think it has to be a regularized framework that creates an equitable environment for freelancers, remote workers, as well as employed resources. We cannot shut it down. We cannot shut off our talent for this global opportunity. But at the same time, we have to protect small companies that are mostly impacted because of this, because of their investment in these resources. और वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की एक रेगुलराइजेशन फ्रेमवर्क से होगा, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। Thanks, Mujib. Thank you. Rehan Rawala, now over to you, sir. Now, in your manifesto, I picked up a number, $100 billion of IT exports. Impressive. What will be your implementable framework to achieve this 50x growth? What will be the time thing goes wrong during the process? Over to you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। मेरा नंबर तो 1/10 है जो हारिस ने बताया है। अभी जिस तरह से आपने बताया, देखिए हम ज़्यादातर लोग जो हैं इंसान हैं। पाशा 20 साल पहले जब बनाई गई थी वो उसी तरह से चल रही है जिस तरह से 20 साल पहले बनाई गई थी। पिछले 3 साल में एक आदमी आता है, उसका नाम है सनी, पाकिस्तान में 1.3 मिलियन रिसोर्स क्रिएट कर देता है ई कॉमर्स की, और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 प्रोवाइडर बन जाता है ई कॉमर्स की सर्विस का एज अ बैक एंड। जहाँ पे अमेजोन है भी नहीं, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो हर पत्थर उठाओ तो 5 निकल आते हैं। हम इस वक्त ये जो इवेंट कर रहे हैं ये भी हमें लाइव नहीं कर रहे, पता नहीं किससे छुप रहे हैं, 30 आदमी सुन रहे हैं, हम खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। तो हम जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं एज अ नेशन, जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हमारी मेंटालिटी ओपननेस की नहीं आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। वो सारी ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे क्यों नहीं है, यूट्यूब में भी क्यों नहीं है, इंटरनेट पे क्यों नहीं है? उसमें ऐसी कौन सी टॉप सीक्रेट सॉस है जो कि गूगल को नहीं मालूम है, जो कि फेसबुक नहीं बता रहा है? लोगों को बताया कि ये सीख लोगे तो ये पैसे बन जाएंगे। लोग दुबई जाने के बजाय, सऊदी जाने के बजाय ये सीखना शुरू हो गए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें बेचने के लिए नहीं है, हमें इस्तेमाल भी करनी है। सुबह शाम रात टेक्नोलॉजी 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 तो हम करते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। अब हम सिंपल से नंबर ले लेते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन, मैं 250 मिलियन बोलता हूँ, आप 200 मिलियन लगा लीजिए। 200 मिलियन में से हम अगर सिर्फ 10% पाकिस्तान को, जिसको हमने गज़ल, अल्लामा इकबाल और गालिब और ये सब सिखाया था, उसको हमने बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई, बेसिक फ्रीलांसिंग नहीं सिखाई। तो जब मैं, अगर मेरा बच्चा सिलिकॉन वैली में रह रहा होता, वो पार्ट टाइम काम कर रहा होता जिस तरह से सब अमेरिकन बच्चे काम करते हैं, तो $500,000 वो भी बना रहा होता। तो जब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे अगर ये काम करना शुरू हो जाएं और हम इसको स्केल करने में कामयाब हो जाएं, तो सिर्फ अगर स्कूल के बच्चे अगर कमाना शुरू कर दें, जो कि 20 मिलियन बनते हैं, तो 120 बिलियन डॉलर साल के बन जाते हैं। अगर हम इसको सिंपल मैथ के हिसाब से लगा लें, हम पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, हम कोई चूचे मूचे लिथुआनिया, एस्टोनिया नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर 110 एस्टोनिया फिट हो जाते हैं। वहां पर हर साल जो है हर 12 बिलियनर, हमको अपने आप को चेंज करना होगा। व्हेन वी रीइन्वेंट आवरसेल्फ एज अ पर्सन, एज अ कंपनी, वी विल चेंज। हारिस इज अ ग्रेट एग्जांपल, उनकी जो कंपनी है जोल्टा ग्रुप इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। हमें उनसे सीखना चाहिए, जो हमारी गलतियां हैं हमें उनको ठीक करना चाहिए और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं तो इसको स्पेंड करूंगा कि रूमी साहब कह के चले गए कि पहले मैं बहुत अक्लमंद था, सारी दुनिया बदलने की कोशिश करता था, फिर मैं थोड़ा सा दाना हो गया, जानने थोड़ी सी विजडम आ गई, तो अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान की जो अपनी पाशा के मेंबर्स हैं, अगर वो सिर्फ अपने ऊपर ही काम कर लें तो हम 50 नहीं 100x ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे। मुजीब साहब जैसे लोग हैं, अहमद साहब जैसे लोग हैं, मोहसिन साहब जैसे लोग हैं, मुदर्सिर साहब जैसे लोग हैं, हारिस जैसे लोग हैं, हम अगर इनको अपने अपने टीचर बना लें एक एक चीज का, तो हमारी ग्रोथ कोई वजह नहीं है कि हम 100% खुद से ग्रो ना कर जाएं। कोई रीजन। Thank you. Moving on to Shadat Shahid.
Shadad, how will you convince FBR, the Finance Ministry, and the other relevant provincial revenue departments to let go of the taxation on IT and especially on IT exports? And why do you think the industry deserves this and qualifies for such a subsidy? So let's do a simple. So let's do a simple mathematics, right? So what are we really as a country pleading the world powers for? Why are we bending a back in front of all the wealthy rich nations? कि हमें कुछ पैसे दे दो, $5 million दे दो, $1 billion दे दो. एक 1.1 या 1.2 billion dollar के लिए IMF के we have really sort of given up too much. हम एक ऐसी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं जो कि जिसका पोटेंशियल जो है वो 5x है इन द नेक्स्ट 3 years इजीली हम कुछ से. तो हम कैसे अचीव करेंगे? सो सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि जो मैंने सीखा है इस भाषा के वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, वो ये है कि आप ही हम बात करें 0.25% टैक्स की. सो प्रॉब्लम ये है 0.2% टैक्स का इशू शायद नंबर टर्म्स पे इतना नहीं है, लेकिन बिकम अ कस्टमर ऑफ FBR. और जब आप कस्टमर बन जाते हैं दैट टैक्स एंड और अगर कहीं पर look at it, जो होम रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर 25 रियाल मिलते हैं. 25 रियाल हुकूमत पाकिस्तान देती है. अगर फिर पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम भी बना थ्रू उन लॉयल्टी पॉइंट से वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, पे एक टिकट परचेज कर सकते हैं. इस कदर फैसिलिटीज क्यों की जा रही है? ताकि पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आए. दूसरी तरफ एक आईटी सेक्टर है. एक आईटी सेक्टर वो है जो कह रहा है मैं पैसा पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूँ. तो मैं पैसा तो बाहर भी होल्ड कर सकता हूँ, दुबई में, सिंगापुर में, डेलावेयर में, कहीं भी होल्ड कर सकता हूँ जहाँ मेरे लिए पैसा मूव करना आसान हो. तो मुझे बताएं कि मेरा पैसा मंगवाना पाकिस्तान में मेरे लिए जुर्म ना बन जाए. उसके लिए जो अहम तरीन लोग हैं वो इसमें एक स्टेट बैंक है और एक FBR है. सो FBR जब आप टैक्स लगाता है तो जाहिर है उसके बाद तमाम जो आपकी जो खुशखबरियां होती हैं साथ आती हैं अगले 2 महीने 6 महीने में. मुझे भाई को पता है, हमें पता है कि किस किस्म के में अच्छे मैसेजेस आते हैं FBR से. फिर हम यहाँ भाग आउट कर रहे होते हैं कि भाई ये हमारे लिए गलत है, एप्लीकेबल नहीं है. सो हमें करने की क्या जरूरत है? हमें समझाना ये है सिंपल मैथमेटिक्स गवर्नमेंट को कि एक $1 billion एक्सपोर्ट का मतलब है 0.25% टैक्स पे $2.5 million. सर $2.5 million में जो पैसा जाता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वो शायद लगभग कम बेश 40% 50% जाता है. तो $1 million, $1 million के लिए लिटरली $1 million के लिए आप $1 billion के आईटी एक्सपोर्ट को रिस्क पर डाल रहे हैं. इट डज नॉट मेक मैथमेटिकल सेंस, इट डज नॉट मेक स्ट्रेटेजिक सेंस. तो यार जिस सेक्टर को आपको ग्रो करना है, एंटाइज करना है कि यार अपने आप को आप डॉक्यूमेंट करें इकोनॉमी को थ्रू कैश इंसेंटिव, वहां आप उसको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं बाय आस्किंग दैट कि क्या कोई मसला नहीं है बेटा, बस आ जाओ, बस इतना मुन्ना सा टैक्स है तुम उसको दे दो, उसके बाद जो होगा वो कौन मैनेज करेगा? सर ये एक सिंपल सी मेरे ख्याल में हमारी होगी गुजारिश. और जाहिर है उसके आगे पीछे तो आप जैसे उस मेहनत करनी पड़ेगी. And especially if and when the table turns in the favor of the employers again, how will you? के तौर पे पाशा का नाम होगा और इस वजह से पाशा के पास लीगली एक फैसला करने की गुंजाइश होगी. वरना पहले भी डिस्प्यूट्स आते हैं और एक पार्टी पाशा कुछ भी कह देगी तो दूसरी पार्टी नहीं मानेगी. तो आर्बिट्रेटर होने के थ्रू ये एक लीगली अदालतों की एक अल्टरनेटिव बन जाएगी पाशा. और देन वी कैन एनफोर्स. Thank you, sir. Thank you for your time. I move towards Syed Haris Azhar. Haris, you've in your manifesto, you're talking about that you should be able to bring top-tier companies to Pakistan. Now, what do you think are the hurdles in that? What are the stakeholders, the government stakeholders, do you think that you need to talk to? What are the problems attached to them? And how will you convince each of those? Sir, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का तो मसला ही कोई नहीं है इसमें कि टॉप टियर कंपनीज आएंगी. तो हमारे 2 ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन ये है कि हम एग्जिस्टिंग जो यहाँ कंपनीज हैं उनसे उनको अटैच करा दें, लेकिन उसके लिए हमारे पास वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है, वो उस लेवल की
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हम कोई भी बड़ी कंपनीज को यहाँ पे डेवलपमेंट हाउसेज अब तक लगा के नहीं दे सके। एप्स एंड गेम्स के लिए कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे आके बैक एंड सर्विसेज पे काम नहीं कराते हैं, बहुत लिमिटेड स्केल है। जितना स्केल इंडिया या दूसरे वियतनाम में जाता है वो बहुत मेजर स्केल है। तो अगर हमारे पास वो वर्कफोर्स यहाँ अवेलेबल नहीं होगी तो हम वो तो कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें वो वर्कफोर्स प्रोवाइड करनी है जिसको उस स्टैंडर्ड का काम करना हो, जो बाहर के लोग आके यहाँ पे कंपनीज अपना इन्वेस्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप करवाएं, और वो या फिर अपना डेवलपमेंट हाउस यहाँ पे लगवाएं। गवर्नमेंट का सिर्फ जहां तक बात आएगी, गवर्नमेंट को मेरा नजरिया ना 2 चीजों में बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी, अगर कोई बाहर की कंपनी, जैसे हम पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ये वाला ऑप्शन ऑन कर दे कि बाहर से जो अगर इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में कंपनी खोलना चाहता है, पाकिस्तान में पैसा लाना चाहता है, तो उसको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। दूसरी चीज, अगर हमारे खवातीन को एम्पावर कर दिया जाए, मैं थोड़ी सी बात हट रही है ट्रैक से, कि खवातीन अगर कोई भी बिजनेस लीड करते हैं उसमें ना प्रोविंशियल टैक्स कोई लगेगा, ना ही किसी किस्म का कोई फेडरल टैक्स लगेगा, उनकी कंपनी 100% टैक्स फ्री होंगी। आप आज ये लिख लें मेरी बात, विद इन 2 years टाइम ये हम भूल जाएंगे कि मेल सीईओज कितने हैं, सिर्फ शमीम यहाँ बैठी हुई थी, तो अब आधी औरतें बैठी होंगी। अगर हम अपनी इकोनॉमी में 50% स्टेक होल्डर्स को ऐड नहीं करना चाहते तो हम इंप्रूव नहीं कर सकते। और जब तक ये लड़कियों को आप चार्ज नहीं देते, इकोनॉमी में पार्ट नहीं बनाते, ट्रस्ट कर लें, बहुत सारी बच्चियां तो जॉब ही इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कोई खवातीन के लिए वो समझते नहीं पेरेंट्स की जगह सही है कि नहीं भेजने के लिए। तो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक में चला गया था, लेकिन आपको पॉलिसी तो गवर्नमेंट को 2-3 बनानी है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें अपनी रिसोर्सेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है जिसकी वजह से वो बाहर वाली कंपनीज हमारे पास आएंगी। इसलिए मैं अपनी गेमिंग इंडस्ट्री में भी ये बात बार बार कर रहा हूँ कि हमें अपनी वर्कफोर्स को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, यूनिवर्सिटीज को ऑनबोर्ड करना है, ताकि हमारे पास वो वाला रिसोर्स पूल अवेलेबल हो। मैं सिर्फ आपको गेमिंग की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा एक्सपर्टीज उसमें ही है। ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही है। आपके मुदस्सिर भाई ने पूरी इतनी लंबी टेक्नोलॉजी की लिस्ट बताई थी, वो इसीलिए बताई थी ताकि वो अगर हमारे पास राइट रिसोर्सेज होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज हमारे पास आएंगी। अभी वेब3 की बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत कॉमन है कि हर एक जिससे आप पूछेंगे वेब3 पे बात हो रही है, लेकिन क्या उसकी राइट रिसोर्सेज हमारे पास हैं? अभी हम बहुत पीछे हैं, दुनिया जिस लेवल पे काम कर रही है हम बहुत पीछे हैं उससे, लेकिन अगर हम आज करना तो हमको रिसोर्सेज ट्रेन करना पड़ेंगे यहाँ पे पहले। थैंक यू। Thank you, Aris. Thank you, Aris. So, last person in our queue today, Talha Munir Khan. Talha, the question to you is: consider you are talking to State Bank of Pakistan and asking for free flow of foreign currency for the IT exporters. Can you identify what will be their reasons against you, and how will you address these reasons, and how will you get your way with them? Thank you so much. I think, it's related to Usman. One of the key objectives, Shahzad Bhai ne bhi kaha कि we want to bring money in Pakistan, and allow IT businesses to bring money in Pakistan. So for some of you would know that Pakistan government has a Roshan Digital Account program which allows you to bring in money. Expats जो हैं वो अपने पैसे वहाँ से invest कर सकते हैं directly into a Roshan Digital Account. And government of Pakistan is basically paying 8% tax on top of that. Now, 8% interest on top of that, and they can pull that money anytime. And the increase in Roshan data accounts or remittances through Roshan data account has been phenomenal. Now, point is that in terms of IT companies, we don't have that flexibility to bring in that money. You know that we can open US dollar account, we can only retain a 35% of remittance in a US dollar account, and that account you don't have any checkbook. You can barely use it for transferring the international payments. There's a lot of issue in that. Now the question is that if individuals, and if government is allowing individuals to bring that money into Pakistan and paying them 8% interest. So I am a company, let's say, I have a monthly billing of $300,000, let's say, and my Pakistani expenses of back office is $100,000. So I'm going to just bring $100,000 into Pakistan, and then keep that $200,000 in my US account. And after a year, I would end up paying basically how much? About 35% tax on that revenue that is sitting in my account, or that profit that is sitting in my account. And if the government allows you to bring that money into a Pakistani foreign export account, then basically
without any tax, and you can pull that money anytime. So it's a one-way account. So you are not saying you are basically, the misuse can be if you're allowed to kind of, put the money from Pakistan into that account. So all I'm saying is that government needs to ensure that the money that is coming from outside, it is tagged like Roshan digital accounts, and then it can be used. A lot of businesses like us, maybe, they will start bringing money because they are anyways paying 35% tax on their profit in US. So वो पैसे अगर ला के यहाँ रख लेते हैं और किसी टाइम उनके बिजनेस को एक्सपेंशन की जरूरत है, किसी टाइम उन्होंने कोई एक्विजिशन करनी है, मर्जर करना है, उन्हें इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हायर करना है. So we need that flexibility. You cannot expand and grow a business without fixing this problem in Pakistan. I believe it will really increase the inflow of IT remittances in Pakistan. So that is, I think we need to be mindful. जो आपका आखिरी point था कि इसको misuse कैसे किया जा सकता है, I think उसको हम ensure कर सकते हैं कि जो IT companies हैं जो export कर रही हैं वो legitimate हों, और उसके लिए पाशा एक बड़ा important role play कर सकता है to verify them कि these are the exports. Thank you, जी. We are over the time. So, okay, so we are at 7:04 p.m. We have closed the major part of this whole exercise. Now, regarding a minor part, Hira wants to open the floor for questions and answers from all the other attendees. If everybody is okay, can we go ahead with it for another 15 minutes, please? Sure, no problem. Okay. Hira, over to you. Over to the questions from the panel and from the attendees. So I think we had one question in the chat. Somehow the chat is not visible to me anymore. If anyone can track, किसने वो question Hira, किया था? have a look at the Q&A. जी, हाँ जी. So अभी questions. Yeah, so I disconnected in the middle, so I'm not able to see all. So maybe Osman, you can pick the questions and you can ask the persons to unmute their mic and share. 3 questions. I can do that. Probably one question is that, can you share what is your vision? How would you achieve in some measurable, tangible targets in a certain time frame? How would you be contributing for the growth of IT industry? I think more or less Osman basically augmented this question to everybody. I think it would be too late doing that. And it would take a lot of time. If we, Hira, how do you reckon we do this? So there were 2 questions which I think I'll straightforward. One question was about how much time these are all great, capable people. But the CC is a voluntary position. That's it. This question was in the chat as well. How much time are you willing to allocate? Osman, maybe you want to take. Yeah, each of you, 1 minute, please, starting from the first, Abdulaziz Saab. And the question remains the same. How much time, number one, would you be able to allocate to Pasha's activities over this whole year? B, what has your experience has been up till now in doing similar activities, and what were the outcomes of that? So I'm clubbing both these questions. Please prepare your answers accordingly. Abdulaziz Saab, I'll start with you in next 20 seconds, so I'll allow you to prepare your answer. ये दोनों answers 1 minute में देने हैं जी? जी, दोनों answers. How much time and what has been your experience thus far, and what was the outcome? Okay, I don't need 20 seconds, so I will start right now. जहाँ तक time का जी, I can afford to give like 4 to 5 hours a week. और दूसरे, चूंकि मैंने पहले कुछ काम किया है, स्पेशली टैक्सेशन मैटर पे पाशा के साथ, और कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट करने पे, इसी तरह POS की प्रॉब्लम थी तो बहुत सारी ड्राफ्टिंग की थी. इवन जो टैक्स से रिलेटेड ड्राफ्टिंग की, दैट वाज अप्रूव्ड इन प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, और वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हो सका गवर्नमेंट जाने की वजह से. सो आई नो कि आपको स्पाइक्स आती हैं जब आपको इस किस्म का कोई काम करना पड़ता है. लाइक आई वाज डूइंग वर्क विद बदर फॉर 8 hours a day, तो 2-3 दिन मुसलसल जब आप ऐसा काम कर रहे हैं. तो ऑन एवरेज आई गेस आई एम एबल टू गिव like 4 hours a week, but
when required, everybody will need to chip in with its time. So I think I'm next. So quickly, so experience-wise, just to highlight a couple of points. So I'm part of IPO, where 40,000 global CEOs are connected. Still, I am giving my sizable time to the community in some shape and form, and just trying to contribute. And COC जब बना, so government had no idea what to do. कोविड को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी कि कुछ डिजिटली हम इस चीज सिस्टम को किस तरीके से कर सकते हैं. So, as an individual, I approached Chairman PTA to a couple of other authorities at that time, and we set up NCOC smart lockdown within 7 days by spending, day and night over there at particular place. I'm part of Islamabad Chamber, Karachi Chamber, Pakistan China Chamber. जहाँ पे किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट. आई थिंक अब्दुल अजीज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वी नीड टू play on our strengths. So every party, every single individual has a strength, and when it comes to the team, so as a team we need to collaborate collectively. हर बंदा उसमें अपना अपना रोल प्ले करेगा, एंड जहाँ तक टाइम की बात आती है, आई थिंक दैट इज द बेसिक रीजन of trying to contest and part of this CEC, where we can contribute to the society in some shape and form by allocating sizable time say and dedicated hours in a week for the pasha, not only for the pasha, for the IT industry and for the nation eventually. Gee, on the time part, I'm pretty open, because yes, if I say if I have to lock time, yes, 5 to 8 hours per week is something I can commit for sure. But on top of that, this is not something bound, because historically, this is something I've been doing for a good time, from last like 10-14 years, visiting universities, PBIT, PITB, collaborating with the events, with the companies to work together, and so many other things. That's already been going on. On top of that, working with YP, FI, and rest of the bigger platforms, consulting the startups, working with them, and hosting them anywhere. That is something which we are already doing offline. Like Pasha is a platform which is going to help us do that in a more, in a more teamed way. That's very much required. So yes, that part of time, I'm not closing or ranging it to anything. If that's required, if I have to work full day, I am available for full day. This is going to be, again, this is going to be a team effort. I am not going to be the one who can say that I am going to assign this much hours, because when moving for a cause, day, night, time is something which is, I believe, secondary for all of us. Thank you. Who's next? Hello. So Azam Mughal is next. He is not here, so we'll move on to Jamil. Over to you. Gee, I think time is one aspect. 5 hours, 6 hours, 7 hours. I think we have to work as a CEC to build up the objectives first. Or jo objectives हम define करेंगे, in order to achieve that, whatever needs to be done and however we can actually get those objectives done, that is the main focus. पिछले साल भी I had been part of the brand committee. We were traveling to several countries, including Saudi Arabia, Africa, Europe, and multiple places, Canada. So time तो दिया गया है पिछले साल भी काफी. लेकिन we all need to remember, we are all volunteers. We need to support each other. Sometimes we need to augment each other, but our collective goals need to be pushed forward by all the team members, and not only the CEC, but by the subcommittee and larger groups as well. So I think as a part of an agenda, I would want to focus and push the objectives forward that needs to be driven, and then also have some kind of a KPI and goals, which we can always look back to and trace back to in terms of progress. Hence my framework that we need to create diversity, we need to create transparency, we need to create accountability, and we need to track progress. Thank you. The next is Mujib. Thanks, Osman. I think in terms of time, as all of my colleagues have mentioned, it's at least 6-7 hours a week to aapke lag hi jate hain. And then in certain other occasions, there is no time limit when it comes to working on certain critical things. In terms of achievements with Pasha, previously, I'll highlight 3 things very, very quickly.
फर्स्ट वन उस्मान का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक था, वो PTA वाइट लिस्टिंग का। शहजाद चेयरमैन थे मेरे ख्याल में उस वक्त, about 3 years back, where a lot of companies got blacklisted. I was tasked to sort of see if we can work with PTA on a whitelisting process. Very glad to know that we have now an online process. I know there's still kinks in it, but at least we've gone away from a package of 40 documents that companies have to put together to get whitelisted, to now where it is online. So हमारे सब दोस्तों ने भाइयों ने बात की about outcomes. So I think that's a good outcome that I was fortunate enough to be part of and lead for Pasha. Secondly, we had Usman, you were very much in the thick of it. I have to give the example. I was made a part of the working committee or steering committee of a project on IT certifications. That perhaps took the most amount of time because we had to uncover some corrupt elements within the government, fight them, face incentives as well as threats from them. It was a fun, again, it was Shahzad, I think, was the chairman at that time. It was a fun few months. Thankfully, we were able to handle all of that, get those people investigated, dismissed, and get that project back on track. I think that was the most time-consuming element that I did with Pasha. And then lastly, something that's ongoing right now, a key element, सबने brand की बात की, हमारे पास कोई collateral नहीं है. मैंने अपने पहले comment में भी ये बात की थी. We do not have a report that gets our foot in the door. We are not mentioned anywhere. Every other country that we competed has that. So 2 years ago, we had gotten a PC1 approved for conducting a study on benchmarking Pakistan's IT industry that we can take to clients. If Lufthansa is looking for 200 support staff in technology in Pakistan, why should they come to us? So that study is ongoing. Myself, Bilal Mahmood and Salman Dar are on that steering committee. That is taking a lot of time with the government. To all my colleagues who are aspiring to come to the CAC, Usman, आपको एक दिन पहले जब ये MDP से थे, अब जो भी आएंगे वो एक दिन पहले आपको फोन करेंगे कि जी कल 4 घंटे की मीटिंग है, आ जाएं. तो be prepared for that for all my colleagues. So I think ये जो आखिरी वाला project है, the study, I think that is going to be the most impactful one that we have. I think it's going to come out in the next 30 to 60 days. And it will talk about a lot of things that my colleagues have spoken about. So very briefly, these 3 things I would categorize as my contribution so far. Thanks, Mujib rightly pointed out. Even as the former MD, I'm quite painful still in invoking that 4 hours meeting. So Rehan bhai, over to you now. अच्छा जी, मुझे क्योंकि जो भी नया मंजन लेकर आता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खिंचाई होती है, ज़्यादा शामत आती है, तो उसको समझाना बहुत पड़ता है, एवेंजलाइजेशन बहुत करनी पड़ती है, प्रीचिंग बहुत करनी पड़ती है, बार बार समझाना पड़ता है. तो क्योंकि आई हैव बीन इन द फोरफ्रंट व्हेनेवर इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, तो जब से कंप्यूटर्स आए हैं, जब से बताते हुए आ रहे हैं कि भाई ये मॉडेम होता है, ईमेल के ऊपर भी शामत आती थी, इंटरनेट के ऊपर भी धोखेबाजी कहा जाता था, और अब ऑनलाइन कमाने के ऊपर भी धोखेबाजी कहा जाता है. तो आई एम अवेलेबल, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 30+ years and I will give as much time as needed to grow this industry in this country, because ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पर ना रोड चाहिए, ना बिल्डिंगें चाहिए, ना मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं. यही वो एक होप नज़र आती है जिसके अंदर हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए. और ये वाहिद रीज़न है कि मैंने पहली दफ़ा किसी भी इस तरह की बॉडी में PSEB में, सॉरी नॉट PSEB, पाशा में हिस्सा लेने की कोशिश की है. और मैं समझता हूँ कि इट्स अबाउट टाइम कि हम इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ क्रिएट करें. मैं पास्ट में भी कराची चैम्बर्स, फ्लोरिडा की जो चैम्बर्स थी उसमें मैं एज अ बेस्ट CEO भी अपॉइंट हो चुका हूँ, अवार्डेड हो चुका हूँ. पाकिस्तान में भी मल्टीपल टाइम बेस्ट CEOs के लिए अवार्ड ले चुका हूँ, ग्लोबली बहुत सारे अवार्ड्स ले चुका हूँ. तो I think I will give as much as is needed to go forward with this. Thank you so much.
Thank you, Shahzad, over to you. The question is very specific. How much time do I need to invest, or I can invest in Pasha fairs? I think I would take a very different stance altogether. I am not committing any number of hours per week because it may vary week to week, month to month, and quarter to quarter. At times it takes you the entire day, the entire weekend, possibly more than that. And at times this is a very sort of quiet week. So coming to Pasha CEC means committing that you will give a lot of value that Pasha CEC deserves, rather than just a number of, it cannot be measured by the number of hours. So मेरा एक तो view ये है कि we have to create Pasha so strong as a secretariat that we don't scare away people who can give a lot of value to Pasha CEC by their wisdom and opinion, and they just get scared away कि शायद उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगाना पड़ेगा. So the whole vision behind institutionalizing Pasha secretariat and Pasha was to have the people elected into the CEC and they guide and lead Pasha, which is executed through a very strong secretariat. So मैं नहीं समझता कि हमें बहुत ज़्यादा घंटे लगाकर इसमें कोई फख्र करना चाहिए. हमें ये फख्र करना चाहिए कि हम जिस विजडम को लेकर आ रहे हैं सीसी के अंदर, एक्सपीरियंस को लेकर आ रहे हैं ऑफ आवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑफ आवर कॉर्पोरेट सक्सेस एंड व्हाटएवर दैट वी आर इनटू, हम उसके थ्रू पाशा को कैसे लीड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेक्रेटरीट को मजीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकें. नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन थिंग्स. मेरे ख्याल में सीईसी में वही इनको आना चाहिए जो कि बहुत पैशनेट हैं about growing the whole IT sector rather than only the areas which they are comfortable with or where their business interests lie. So this is my answer to it. बाकी जो मेरी पास में participation है वो I think that's very clear. Thank you, Shahzad. Thank you. So I believe Shamim is not here, so we move on to Syed. If Shamim is here, Shamim can take up the question. Okay, so we'll move on to Syed then. जी कहते हैं कि अगर कोई ओलंपिक चैंपियन किसी ने बनना है ना तो उसके लिए 16,000 घंटे की आपको एफर्ट करनी पड़ती है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं. और अगर मैंने 16,000 घंटे अभी तक नहीं लगाए तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे 1-2 साल में वो पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री के लिए. पिछले 10-12 साल से जितना मैंने काम किया है, हर प्रोजेक्ट STZ को ले लें, एक्सपोर्ट कैश रिवॉर्ड को ले लें, टैक्स एग्जाम्पशन को ले लें, जितने बजट प्रपोजल्स गए हैं और पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली, उसमें ऊपर नीचे भी होती चीज़ें, मोस्ट ऑफ देम आपको मिलेगा कि इफ नॉट ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ माय वर्क डायरेक्टली खुद टाइपिंग करके या खुद इन्वॉल्व होके डायरेक्टली वर्कड ऑन इट. और ऑफन टाइम्स अपनी कंपनी की फुल टाइम जॉब से ज़्यादा मैंने पाशा के लिए काम किया कंसिस्टेंटली पिछले 7 सालों से. और ये मेरे पार्टनर और मेरी कंपनी का सबसे बड़ी शिकायत भी मेरे से ये है. एंड राइट नाउ दे आर एक्चुअली कंसर्न कि यार ये इंडस्ट्री से पे हमसे लेते हैं और काम इंडस्ट्री के लिए करता है. सो बट ये कि ये बहुत बड़ा काम है, इम्पैक्ट है. इसलिए देखिए गवर्नमेंट में फेडरल में कम से कम 20 इदारे हैं, PSEB, कॉमर्स, you name it, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टन्स ऑफ देम. 2-3 बड़े इदारे कराची वो सिंध में भी हैं और 2-3 लाहौर में. और ये लोग आपको एक दिन के नोटिस पे बुलाते हैं एंड देन दे वांट के जी 2 दिन हमारे साथ बैठ के मैराथन करो. ये परसों बजट प्रपोजल जा रहा है, ये कल ये हमें मिनिस्टर ने बुला लिया है, कल प्रेसिडेंट ने बुला लिया है, ये हो गया. डॉक्टर शुएब जानते हैं, उन्होंने मतलब जितना टाइम लगाया है. शहजाद रहे हैं चेयरमैन, ये जो बदर को पता है, बदर ने जितना ट्रैवलिंग करनी पड़ी उसको. तो ये बहुत मुश्किल काम है. और इस वक्त पाशा की सेक्रेटेरिएट की कैपेसिटी इतनी नहीं है. तो अगर हमारे सीईसी मेंबर्स ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे कि जी आप हमारी कमेटियों की सेक्रेटरी भी बने, पूरी हमारे मिनट्स भी आप ही लिखें, सारा हमारा वेट भी आप कैरी करें और फिर बाकी भी सब कुछ आप करें. इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाशा इज टू वीक फॉर दैट. पाशा में 50-60 लोग होंगे तो फिर वहां तक पहुंचेगा. उस वक्त तक हमें और वी नीड हमारी अपनी भी कोई एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमें पूल इन करनी पड़ेगी. I am available as a full-time job. I would say I have been doing 2 jobs, एक मेरी कंपनी में और एक पाशा में, which mean 8 hours, 7 to 8 hours on an average per working day, which means के I have actually worked 20 to 30 hours per week, and I have pictures and collateral to show for that.
I think मैं Barkan, Dr. Shoaib and the other chairman that have become, आप उनको list कर लें हमारी efforts को. तो maybe I've always done most amount of work. ये बाकी लोगों ने भी कोई ज़्यादा काम नहीं किया. और आगे भी I am committed if I am given this leadership role, thought leadership role for the industry. और but personally मेरा interest यही होगा कि मैं अब अपने business पे focus करूं. अगर मुझे नहीं trust मिलेगा industry का, तो मेरे group को नहीं trust मिलेगा, तो then I'll focus on my business and let the new people perhaps give the time जो मैं देता हूं. Thank you, Sayyid. Moving on towards Haris Azhar. Sayyid Haris Azhar, over to you, man. जी उस्मान भाई, इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है. पहली बात ये है कि टाइम की कोई कैद नहीं है. और दूसरी चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था कि मैंने पिछले 1 साल में गेमिंग एंड एनिमेशन कमेटी में मेंबर के तौर पे सर्व किया है. तो आई गेस पूरे साल में जब से कमेटी बनी और मीटिंग्स हुई, तो शायद 2 गालबन मीटिंग्स थी जिसमें मैं एब्सेंट था. एक दफ़ा मैं आउट ऑफ कंट्री था तो नहीं थी, और एक गालबन 2 वीक्स बैक मेरे फादर को हार्ट का कुछ इशू था तो वो हॉस्पिटलाइज थे. तो उस टाइम पे मैंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की. तो आई गेस ये इनफ होगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिधर मीटिंग कॉल की भी हो और रिक्वायरमेंट और मैं उधर ना हूँ. तो ऑब्वियसली जब इस चीज़ के लिए है तो किसी विजन के साथ अवेलेबिलिटी तो करना पड़ती है. इट्स नॉट जस्ट सीसी. एक विजन है, उसको अगर आगे लेके जाना है तो आपको कुर्बानी दे. थैंक यू. Thank you, Haris. Over to you, Tala. Gee, I think the answer is that, you know, I can give about 5 to 8 hours per week or whatever needed, because I would agree with the rest of my colleagues. We have to understand, first of all, पाशा का जो बेसिक रोल है वो पॉलिसी एडवोकेसी है. अगर हम कुछ और भी करना चाहते हैं ग्रोथ पे, स्किल्स पे, एसेंशियली CXO डेवलपमेंट, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है प्राइवेट सेक्टर में. वो गवर्नमेंट की पाशा के साथ लिंकेज क्यों है, इसका रोल पॉलिसी के साथ लिंक्ड क्यों है, और गवर्नमेंट के साथ काम करना ही सबसे ज्यादा टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है. वरना तो प्राइवेट सेक्टर में सब अपनी अपनी कंपनीज चला रहे हैं. सो ये चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पाशा हमारे लिए सब कुछ करे जो कि एक बिजनेस को खुद करना चाहिए. और जो पाशा का असल रोल है अगर हम वो रिकग्नाइज करें, और इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड टायरिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज ये गवर्नमेंट के साथ जब आप काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज उस तरीके से चीज़ें नहीं होती. और कुछ डिपार्टमेंट जैसे उस्मान आपने आके बहुत काम किया और ऑर्गेनाइज किया, बट बहुत सारे अभी भी डिपार्टमेंट्स और 20 के करीब जैसे सैयद ने कहा डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करना है और वो आपस में ही बात नहीं कर रहे होते. तो यू नो यू हैव टू टॉक टू वन अनदर सेकंड, तीनों का आपस में मिलाना सब कुछ. तो ये बड़ा मुश्किल काम है. ये अगर हम ये समझते हैं कि पाशा का बेसिक काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पाशा का, सबसे पहले वो हमें समझ लेना चाहिए यहाँ आने से पहले सीसी के अंदर. और अगर हमने कुछ और भी करना है तो वो तो हम आउटसाइड भी हम कुछ भी बना के कर सकते हैं. फिर हमें पाशा में आने की क्या जरूरत है if we don't realize the real objective of being in Pasha. So that's what I would like to say. And my contribution, like Shehzad said, पिछले 4 साल से मैं HR कमेटी का मेंबर हूँ और हमने फोकस किया है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें, HR की टीम बिल्ड करें, ताकि अगर मैं नहीं हूँ, ये सैयद नहीं है, कोई और लोग नहीं है, कल को हम अगर इतनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दें कि एक विजन के अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे. सो आई थिंक दैट इज द की थिंग. दैट्स व्हाई यू नो मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि पिछले 3-4 साल में ये जो HR टीम बिल्ड किया, पहले एक हमने ट्राई की एक टीम बिल्ड करने की, वो फेल हुई, फिर हमने दूसरी की. इसमें मेरे साथ सारे कोलीग्स हैं, जिसमें शहजाद हैं, जिसके अंदर अमीन है, जिसके अंदर यू नो अमीन साहब हैं, और सैयद हैं, बरकान हैं, बदर हैं, अब डॉक्टर शुएब भी हैं. सो ये सब ने मिलकर कोशिश की है और की फोकस यही था. यही मेरी कंट्रीब्यूशन है कि हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है. और मुझे इस वक्त डर लग रहा है, आई एम सॉरी बट मुझे इस वक्त डर लग रहा है जिस तरह से हम इंस्टीट्यूशन को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से हम इसको हैंडल कर रहे हैं. Thank you. जी, तो वो जो चीज है ना, वो रिवर्स कर देगी सारी चीज को. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. थैंक यू. Thank you, Tala. The last part of this whole exercise today was a final point from all of you, and I believe we do not have time for that anymore.
So what I'll do is I will, as somebody who has served the industry over the past 2 years, I would rather take this this role today to finish it off and to add the word of caution and the advice and suggestions. Most of you are more experienced than I am, but because I had the recent experience, I can tell you from that experience. Hira, if I'm allowed to do that. Sure. Thank you. So, gentlemen, ladies, be careful what you wish for. This is not an easy task. So we've spent hours and hours, nights up till 4 a.m. in the mornings, in trying to fix these issues. Some things which may look like trivial, something which may look like absolutely straightforward right in front of you, and you would think, why wouldn't this department or why wouldn't I think we lost you, Osman Bhai, for a while. Osman Bhai, are you there? उनकी emotional Can't hear speech you. में. Huh? Sorry? उनकी emotional speech में. No, but I cannot hear him. Others can. Sir, Osman Bhai. नहीं जी, कोई नहीं सुन पा रहा उस्मान भाई को. उस्मान भाई ये कह रहे थे कि घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा घबरा लें आप. उस्मान भाई, आपकी बातें दिल में रह गई हैं, हम नहीं सुन पा रहे. I think he Gents, dropped. I'm about to head into another meeting. Thank you so much for all of the time and wonderful thoughts. I wish all of you good luck and Yeah, I think inshallah we're look done forward with to the see you soon. यार मैं बस मोबाइल के ऊपर चल रहा हूँ, but sorry and apologies. Take care of yourself. I have to enter a meeting now. Bye bye. Same here, Ji. It was Thank lovely you so much. to talk to you all and see you all. Assalamu And alaikum. all the best. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you, everyone. And And good luck. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, ji, nice being with you all. Thank you for your company. Allah Hafiz. Thank you, So, Allah. thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you, Shameen. Thank you, everyone. Rida, I think you can end the webinar. Rida Hashim.